Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, a very warm welcome, everyone. Good morning, afternoon, evening, जहाँ पर भी आप हैं. Hope you're doing well. Hope you're staying safe and hope you're staying healthy. Uh, सबसे पहले तो thank you so much everyone for all the love, support. कुछ दिनों का gap, of course. That was something which maybe I needed as well. तो अच्छा लग रहा है थोड़ी सी break लेके, spending some time with family as well. I know. I wish I could be starting at this time, Sonal. अच्छा लगेगा. It is 8:30 Pacific time, but obviously 11:30 यहाँ पर. So for people who don't know, I am right now in the East Coast. मैं New York side पे हूँ, and that's why there's a 3-hour difference. तो इस time पे I think it works pretty well. Hopefully, once I go back home, I can continue इसी time पे. But more than that, more importantly, there have been so many things happening. चाहे वो पौंड कुंद्रा से related हो, चाहे वो बहुत सारी और बातें हों, उससे सुशांत से related भी चीजें हैं. But we will continue to thank you so much, Vinita ji. Thank you, everyone. Uh, I know I still have to respond to a lot of people. I will in some time, but thank you so much for all the blessings and love. So yes, बहुत सारी और चीजें हो रही हैं, शिल्पा शेट्टी से अगर देखा जाए, और even रिया चक्रवर्ती. मैंने देखा कि कैसे शी इज बैक इन द गेम. अब सेलिब्रेशंस भी हो रही हैं, लोगों की सेलिब्रेशंस पे भी जाया जा रहा है, एंड देन शी इज ट्राइंग टू गेट बैक टू वर्क एज वेल. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिया को काम देना शुरू भी हो रहे हैं. सो रूमी जाफरी somehow seems to be a big fan of Rhea Chakraborty, and he already has a script for Rhea. So I think he wants to be the Masiha. He wants to be somebody who is giving a lot of hopes to Rhea Chakraborty. Unfortunately, he doesn't realize कि जिस तरह से अब तक ये केस के बारे में डिटेल्स के बाहर आई हैं, इट्स वेरी वेरी वेरी, कहते हैं ना, इट विल बी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर रिया टू मेक अ कम बैक. एंड वी रियली डोंट वांट टू सी हर एनीवेज. अगर मैं उसको सिंपल अपनी लैंग्वेज में बात करूं, हम देखना भी नहीं चाहते, एंड वी विल डेफिनेटली नॉट एंजॉय और इवन एंटरटेन एनी सच मूवी, चाहे वो रिया हो, चाहे वो कोई भी हो, एक्चुअली, बिकॉज राइट नाउ वी रियली वांट टू बॉयकॉट बॉलीवुड टिल द टाइम we don't get justice for Sushant Singh Rajput. So we are really roaring for that, and we will continue to do that. So, Mr. Rumi Jaffrey, you could invite Ria, you could invite anybody to your daughter's wedding. You could have any celebrations you want. Blessings for your daughter, no doubt about it. We don't want to kind of, uski to shaadi hai, uski to zindagi sabre. But Rhea Chakraborty, sorry, Babu, we don't really care about you, and we won't ever care about you. Because you snatched Sushant from everybody. So उसको तो हम नहीं बिल्कुल भी भूलने देंगे, और ना तो हम भूलेंगे और ना हम उसको भूलने देंगे इस चीज को. So we'll continue to talk about that. I'll share more details around that. उसके अलावा we had started this series, the reality of Rhea. इसके अंदर भी मैं कुछ चीजें, again, some housekeeping tips which I'm gonna share again, and I'm gonna share. Yes, absolutely, SN. It is. It will already be. It is already a flop, even though it's still in a form of a script. चाहे जो मर्जी कर ले, we will definitely not make it successful. Good morning, Bindu ji. 5:40 a.m. I know थोड़ा टाइम डिफरेंस जो हो रहा है, टाइम जोन डिफरेंस की वजह से, I know some people are happy, some people are not, but it's gonna be like this for another 15 days. Let's see how many days. Uske baad, once I'm back home, I think we'll kind of try to schedule it for us for a very comfortable time. Good morning, Abhi bhai, good morning everyone, and hello everyone. So we'll get started, but before we get started, a couple of housekeeping tips एक बार फिर से. ये जो सीरीज हमने शुरू की थी, I'm sorry, unfortunately we had to take a couple of days break. I'm gonna go do a refresher as well, and let me actually bring that screen जहाँ से हम शुरू हुए थे, so that you all can relate to where we left. और जैसे कि मैंने आपको बताया था
this particular or these sessions, ये जो हम करने वाले हैं, all thanks to three people who have been very, very vocal and very, very instrumental in making this happen. The first one is definitely CYD Share, CYD CHER. उनके ये tweets हैं, she's compiled all the publicly available information in public domain or in any domain, जहाँ से उनको combine करके, collate करके, there's kind of a storyline that has been formed. Uh, the reason I definitely picked it up was because two other wonderful and amazing ladies. One is Diksha and the second is Shefali. They were really, really, interested that we should relate this in the form of a story. तो इसके बारे में, when Diksha brought this up, she shared it. She took permission from Side Share so that we can do it on our sessions. And I'm really grateful to her, grateful to Shefali, and of course, thankful to SideShare for giving us the permission to go through this. I know there is somebody who feels there are a couple of things which are not accurate, एंड इसीलिए मैं फिर भी दोबारा बोलूंगा, मैंने पहले बार में भी सेशन में बोला था, डिस्क्लेमर दिया था, और मैं अभी भी दे रहा हूँ. These are based on how ShedShare looked at all the narratives, all the information available in public domain, and then she formed all the series of tweets. तो ये कहना कि this is like a direct evidence against Rhea for certain things is would be an incorrect statement. All it means is there are facts which are available in public domain जिनके बेसिस पे ये चीजें लिखी गई हैं. सो ये कहना कि रिया चक्रवर्ती सुशांत की एक्चुअल में गर्लफ्रेंड थी वर्सेस नहीं थी, वी आर नॉट वी वोंट बी एबल टू प्रूव इट हियर बेस्ड ऑन दीज ट्वीट्स. बट एट द सेम टाइम कैसे रिया प्लॉट हुई, कैसे रिया ने फैमिली के बीच में डिवीजन क्रिएट करनी शुरू की, कैसे फैमिली से अलूफ करना शुरू किया, there are a lot of things which are available through these tweets, and that's what we really want to focus on. Again, based on these, you're more than welcome to base, or set up your own biases against Ria. But bottom line, Ria definitely is a prime culprit, a prime suspect, based on all these publicly available evidences. हमने कुछ videos, एक दो videos, कुछ pictures last session में भी play किए थे और दिखाए थे. We'll continue to do that in this session as well. Tonight I'm gonna play. Last session में हमने 10 different screens और 10 videos, मतलब 10 screens के बारे में बात किया था. Tonight I might extend a little bit more so that I get to a point where we kind of have a little conclusion, and then we'll continue from there on, because at this point of time, as I see, there are about 79 different pages of this tweet. So एक बार फिर से, I'm going to put it on the screen so that we all can look at not only just the disclaimer but also the person who is uh, hello Dubai, hello Yash, hello Rupaji. Okay, I see a lot of people as well. Hello, Pradeep Pandey. Hello, Pandeyji. Okay, let me share the screen now, and then we will definitely get started from where we left. And here we go. I'll make it full screen for you. So, जैसे कि मैंने कहा, all thanks to CYD Share. That's her ID. Used to be her ID. और उन्होंने बिल्कुल क्लियर शुरू किया थ्रेड ये. Did Sushant consider Rhea as a girlfriend? Did Sushant really love her, or was that a concocted lie? And that's what we are going to display. On disclaimer, उन्होंने भी कहा, my notes here don't contain concrete evidence nor special sources. These notes are based on information shared in the public domain and some analytical thinking on my end. I hope that you would read it and with an open mind, and I urge you to dissect it using your own analytical tools and research. So, based on these disclaimer, इसके ऊपर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा सा एड ऑन हम अपना भी एनालिसिस करेंगे, अपना डाइसेक्शन ऑफ दीज ट्वीट्स करेंगे. Also, we will be adding or supplementing what she has already tried to add on. So, last time I did show you Rohini Iyer. उनके बारे में हमने और add on किया था.
based on all the public information. Uh, Quite possible that we might have ruffled a little, couple of more feathers. बहुत सारे लोग हैं जो are not happy with how Rohini has handled the situation, or the way she has uh, been out of any kind of limelight for Sushant. Halaki, Instagram pe she is huge. She is huge about Sushant, and she supposedly is the best friend of, or the selected very few friends जो सुशांत के थे उनमें से एक वो थी. But Miss Ayer has not been very vocal, which is rightly so, because if you are very close to somebody, you're observing. I'll quote Mahesh Shetty as well in that category, because end of the day, I'm sure Mahesh Shetty will come out. I'm sure he knows a lot more. But whenever the time is right, he will definitely come out, and we'll be able to talk to him as well. Is my belief on that. All right, so I'm gonna go back. So these were definitely the disclaimers. Let me start from where we left. Last session में मैंने आपसे बात की थी, हमने बात की थी around sister. Uh, how she was like, there were two bodies and there were one soul. That's how close he was to his sister. Unfortunately, there are things going on. और अब आज भी मैं सुन रहा था, even though I've been kind of off limit and I've not been that active on social media, but I recently, a couple of hours ago, got to know that अभी भी sister के ऊपर फिर से हो रहा है, fingers उठ रहे हैं, family पे उठ रहे हैं, but the whole thing about Sushant and his sister was they were really, really close. They were like literally breathing off the same lungs, I would say, or there was a single heart beating for both of them. इतना प्यार था, इतना ज्यादा क्लोज थे ये दोनों कि आज की डेट में जो ये बोलता है कि सिस्टर वाज might have been involved, or sister might have known, there might be certain things, no doubt about it. Again, I'm not an advocate for the sister, but एट द सेम टाइम अगर उनकी सिस्टर को इस तरह का ये थोड़ा सा भी आइडिया होता, definitely she would not have left a brother like that. So for those idiots who are kind of still building up these fake narratives, just want to clarify, just want to make sure that we all understand, looking at all the publicly available information around the love, the bond that Sushant had with his sister, it is practically impossible to believe that the family or the sisters knew about it. So I just want to kind of set the stage right, and वहीं से हम फिर से शुरू करेंगे. To know the reality of Sushant's misery, one should carefully look at the aforementioned events and try to correlate. So इसके बारे में भी हमने बात की थी, that particular incident that happened between Rhea and Sushant's sister, जहाँ पर Rhea just wanted to kind of create a divide between the brother sister, uh, and that's where we really left. प्रियंका के साथ the same way she gets me. ये सुशांत की हमने statement पढ़ी थी, and I'm gonna read it one more time before we start from today. So basically, he didn't shy away from talking about his love and attachment to his sisters. He shared a very strong bond with her. He had also talked multiple times about his special closeness to Priyanka. We think in the same way, she gets me. बहुत सारे इंटरव्यूज हुए हैं जहां पर सुशांत ने ये कहा है कि she, Priyanka has been the one who has been very, very close to Sushant. Now let's get back to this Sushant who we now know. Sushant who we now know was very close to his mom. Sushant who we know was very close to his sisters. Uh, if you look at this particular image, you all know, and this is the that famous tattoo, that the only tattoo that Sushant had on his back. Uh, a little history about this tattoo itself was also designed by Sushant's sister Priyanka. Uh, बहुत ज़्यादा वो ट्रैवल जब भी करते थे, and wherever he used to go out,
If possible, he would travel with his sister Priyanka, and occasionally his husband, Priyanka's husband, would also join. uh, Shooting ke aspas, shooting ke baad, they used to hang out. They had this a group. If you remember, Smitha Parekh also shared some of the images, some of the videos in the past, जहाँ पर हमने देखा है, this musical getaway, a musical evening that used to happen at uh, her home, or any event. They used to be all together. Priyanka used to be there. Priyanka's husband used to be there, of course, with Sushant. So the point was, the first tattoo that he made on his body was a dedication to his mother, designed by his sister. So, one more time, I'm going to repeat the same statement that I said. Sushant was always about family, was always about his sisters, his family, his dad, and especially his mom, who he used to miss a lot. To memorize, to kind of set her in her own, like a memory around her. He got this tattoo created on his back, and that's what he said. First tattoo, five elements, mother and me. So this was what Sushant was all about. So people still believing, still saying, that Sushant was being left out by the family. They were just not even bothered about Sushant and all that stuff. This is again another message to them that Sushant was all about family. His family really, really loved Sushant a lot, and they were like very close to each other. So anybody saying anything around that is absolutely, absolutely false. And they would not leave Sushant for anything. Forget the money thing that people are trying to portray. Uh, if you look at this, people were asking, on his Instagram post when he posted, what is it? What does this tattoo signify? What are you trying to accomplish, or by doing this tattoo? He said it is a geometric representation of five elements with a mother and her child in between the intersection. So if you look at this, I'm going to show you again this tattoo. So all the five elements integrated between that is a mother and a child. So this is how he wanted to just make his mother and himself immortal here on his back, and that's how he really wanted to do it. uh, as you can see, Sushant and Priyanka had a wonderful friendship and an immense understanding. There can be the touching poem he wrote on the 19th of April. If you remember, I read the poem as well last time. बहुत ही प्यारी poem on that evening he wrote. Uh, Even the family members. So इनकी एक niece है Malika, who is also a little active on social media, who occasionally posts for her mamu. Uh, she also mentioned and has mentioned a couple of times that Priyanka and Sushant were totally, truly inseparable. Uh, Shweta, who is the sister, has also acknowledged, he admits he was closest to his sister Priyanka, Sony Dev, because she gets him. जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया, सुशांत ने बहुत सारे इंटरव्यूज में भी बात की है, where he says he's closer because she's the one who gets him, who understands and has the same wavelength. Uh, this is the cousin, the niece, who also said yes, they were truly inseparable. So, going back to the theory or the story that we talked about last time, किस तरह से रिया ने ये प्लॉट किया that Priyanka tried to kind of get physical with her and all that's nonsense, and somehow surprisingly Sushant believed in that fake story.
uh, it is very clear that what Sideshare is trying to explain is, if you believe that Sushant had truly believed Ria's lie about his sister, then pause, please, and think again. So basically, there was something else. Basically, it was not about a blind trust in Rhea Chakraborty, but something else going on, जिसकी वजह से सुशांत ने शायद उस टाइम रिया की साइड ली and not his own sister. Not only did he love his sister, he was also an extremely intelligent man, a man with noble values. For him, believing those lies about his sister is a huge impossibility, because it's not just a matter of believing horrendous lies about his sister. It's much bigger than, because in order to for Sushant to believe the lies, his love for Priyanka needs to be weak. His analytical skills, a skill he was known for, needs to totally evaporate, and most importantly, his intrinsic value needs to vanish. Only way this believing Ria's lies about his sister could be true if he underwent a lobotomy. So, just to explain, lobotomy is basically nothing but like a brain surgery. You maybe take out somebody's brain and change it with another brain, or kind of just wiping off the memory of anybody. So this is the point that everybody should understand. The kind of relationship that Sushant had with his sister was not only about a brother sister love, it was like two souls connected to each other. It is not at all possible that Sushant just blindly believed in whatever Ria said, and that would have definitely not happened all of a sudden. So there was definitely something going on. You have to completely change the essence of Sushant to make him fall for weak and sinister lies about people whom he had constantly loved so powerfully and unconditionally. When in reality, Sushant's essence had remained unchanged to the last day of his life. He remained pure, selfless, and courageous. So this is we're going round and round around the same thing, that सुशांत के साथ कुछ तो ऐसा था जो किया जा रहा था. All thanks to Rhea Chakraborty, all thanks to Pitani, all thanks to all these people who got plotted in Sushant's life. जिसकी वजह से Sushant was being blocked from his family. And I'm going to use the word blocked वो इसलिए क्योंकि Sushant can never be, or would have never have thought of staying away from his family or being kind of disconnected from his family. ये पॉसिबिलिटी ही नहीं थी. तो जैसे ये हो रहा था, डेफिनेटली इट वाज ऑल पार्ट ऑफ अ प्लान, ऑफ अ स्ट्रेटजी. अगर आप बहुत सारी पिक्चर्स हैं, इफ यू गो ऑन गूगल एंड जस्ट सर्च सुशांत एंड प्रियंका, you will see a lot of these wonderful, beautiful memories that they shared, a lot of these wonderful moments that they've captured, because they were the ideal brother sister. They were so close to each other that it's not even possible to think that Priyanka knew something, or even as a brother sister you fight. कई बार ऐसा होता है कि भाई बहन में या भाइयों में या बहनों में लड़ाई होती है, डिस्कशन होता है. दैट्स पार्ट ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप. ये कहना कि कोई रिलेशनशिप में फाइट हुई और उस वजह से इनका रिलेशन was not the same, it's an absolute lie. So they were always close. The sisters were so proud of their brother. It is absolutely absurd to even point fingers. यहाँ तक के फेक नैरेटिव्स जो दे रहे हैं कि दे आर स्टेप ब्रदर्स सिस्टर्स, नॉनसेंस गोइंग ऑन. Just to be clear, there is nothing like that, no conspiracy around that. They are the perfect brothers. और मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, I know I could be 100% wrong about that, but मैं फिर भी बोलूंगा,
When you have a brother that comes after four sisters, the amount of love जो एक भाई को छोटे भाई को दिया गया होगा उस टाइम पे, the kind of affection he would have got would have been immense. इन चार बहनों का एक छोटा भाई, just imagine the kind of love he would have got from all of them. और इनके ऊपर, इन सिस्टर्स के ऊपर फालतू की उंगलियां उठाना, ये कहना कि मे बी देवर न्यू अबाउट इट, देवर आफ्टर द मनी। मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था, एक तो रिकॉर्डिंग मेरे पास ही ऐसी है जहां पर ये बोला जाता है कि मुझे तो पहले से ही पता है कि फैमिली इज इन्वॉल्व इन दिस, एंड दैट्स गोना बी द फेक नैरेटिव्स जो चलाने वाले हैं लोग, उन्होंने यही नैरेटिव्स चलाने हैं, which is why I really want to be very mindful, and I keep on encouraging all of you. Either if you're watching those stupid fake narratives or those different channels, then either you go there and tell them to stop. Otherwise, you guys need to stop watching them, and you don't need to give them any kind of importance. क्योंकि इन लोगों का अब ये नैरेटिव आने वाला है, दिस इज द होल एजेंडा दे हैव, that it's gonna be all about the family. They are not even talking about Ria. They're not even talking about anyone else other than the family and the sisters and the brother-in-law. That is so shocking. जहां तक रही even the brother-in-law, आप गूगल पे सर्च करें, you will definitely see most of the times wherever Sushant was, whenever he used to go, uh, he used to be accompanied by Priyanka and brother-in-law, who's not in the picture, but they were all kind of together, and that's what makes me believe that even as an outsider, I call him an outsider because end of the day, एक brother sister का जो relation होता है उसके अंदर, when somebody else comes, like a brother-in-law or somebody, then of course he would still be considered as an outsider. So that's why I'm saying he was definitely there, but he was very very close to Sushant as well, because her get together, her party, her celebration, everywhere we could see Priyanka as well as the brother-in-law as well. So ये जो लोग फालतू की नैरेटिव्स और स्टोरीज चला रहे हैं, उनके लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि नो मैटर ही वाज अ ब्रदर इन लॉ, he was still very very close to Sushant as well. And they used to have a great time together. और कई बार तो हमने कुछ ऐसे वीडियोस भी देखे हैं जहां पर द ब्रदर इन लॉ वाज रियली रियली वेरी सीरियस अबाउट हाउ सुशांत वाज हैंडलिंग सर्टेन थिंग्स. ही वाज देयर टू स्पीक ऑन हिज बिहाफ. एक दो वीडियोस ऐसे भी आए हैं जब उन्होंने एक सर्वेंट तक को, आई थिंक इट वाज सैमुअल, जिसको बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे और बहुत सारी चीजें अगेंस्ट उसके बात हुई थी, बट द ब्रदर इन लॉ वाज स्टैंडिंग लाइक रॉक सॉलिड फॉर हिम. So, again, going back to the same point, let's not point any fingers at the family at this point of time. Now, अगर उंगलियां उठानी है तो उठाई जाए तो रिया पे उठाए, जो वहां थी, जो कॉन्स्टेंटली वहां पर इतने टाइम से सुशांत को खोखला कर रही थी, खा रही थी, उसके ही पैसों पे उसी की लाइफ जी रही थी. And she was the one who really, I would say literally kill Sushant Singh Rajput, uh, or at least played a very crucial and a critical role in the whole mastermind plan बनाने के लिए of how to kill Sushant. Uh, so अभी जैसे शायद भी कह रही है, let's keep all these points in mind and then ask ourselves, would Sushant believe strangers or friends over his beloved sister? Then let's think about the absurd and horrendous allegations that Rhea leveled at Priyanka. She didn't throw a simple accusation. Rhea went into a claim so that it's prosperous and heinous. Unbeknownst to her, this absurd claim key to our decipher what really happened with Sushant. It could be our peephole into Sushant's heart and mind at a very particular day. So basically, ये कहना कि the sister was uh, really involved in that kind of activity, the physical part of it or the physical aspect of it, is really really very absurd, and I can't even believe that people want to believe that.
और रिया चक्रवर्ती की अगर बात की जाए, we all very clearly know, uh, she was there just sucking on the money, the fame that Sushant had, and that's what makes us believe that, uh, she's the one who is. So I'm gonna read a couple of messages as well. We don't know what that means. So reads Ali, I don't know what does that mean. So I am gonna get. It was Rajat Sharma, his accountant. Yeah, that picture was definitely not of his brother-in-law. As I said, he was not in that picture. His family is definitely innocent. See, end of the day, that's what I see. And I want to really make sure everybody understands. We are not here to give any clean chit to the family or anybody, but at the same time, look at, uh, see, Nazneen ji says, I have five sisters and one brother. I understand how special brother SSR was. That's what I was trying to say. Uh, that these people don't even believe कि इस तरह की बात करना कितना ज्यादा गलत है. They need to understand. They really need to understand. Sushant was a young brother who I'm sure they would have done a lot of prayers and all that stuff that normally happens. So इस तरह से कहना कि सुशांत का uh, that step brother sister, I mean some of those narratives, even talking about them, are so absurd that literally it makes me feel very angry, and I'm sure a lot of people feel that way. And thank you for confirming that, Nazni ji. This is what the problem is. This is the thing that we really want to quash. Looking at the screen, I will continue. Hello everyone. She left and saw him dying. Yes, that's what she did. And not only left it at the wrong time. She should not even have come to his, life at all. That's what I firmly believe. Uh, all right, we'll go. We'll move forward. Let's think about ये तो हो गया. And Shah, we know, lived attached. He would also warn his friends. Yeah. She gave a humongous lie, a lie no one other. Most important, she uttered his nonsense to a man who worshipped his sisters. He considered his sisters an extension of his mother's light. And she didn't level the accusation after years and years of befriending. Nope, she had the audacity to do this on her fourth meeting with Sushant. तो हमने जब बात अभी की थी कि किस तरह से उसने अपने आप को फोर्स किया इसके अंदर, सुशांत के साथ, उसके गेट टुगेदर, उसके घर पे आना, उसके साथ आगे family get together में part बनना and all that. Sushant barely knew her at that time. Sushant, we knew, would be livid at hearing such lies attached to his sister's name. He would throw his crazy stranger out of his home. He would also warn his friends about the woman. And that's what makes us also wonder कि इस तरह के allegation को, how could Sushant take it? Sushant would never believe such nonsense. In contrast, such lies would make his blood boil. Such lies would make him more protective of his sister and regretful that he allowed demon Rhea to step into his house. He would feel guilty for exposing his sisters to his wicked person. Even if it wasn't his fault, he would still hurt that a person had dared to concoct such lies about his beloved Sonak Chiria and soulmate. But what actually happened on that day was something else. Priyanka was horrified to see her brother believing those lies. He was even angry with her. He quarreled with her. That was Priyanka saw. Feeling distraught and shocked, she left. This unexpected reaction of Sushant might be an answer and lead. It could clear out all the confusion of how did he allow Ria to have this control over his life and his all the aspects of his life. Did Sushant believe Ria's allegations? A loving, intelligent brother can never fall for such crazy yet so idiotic claim. Ria's unevolved diabolical brain didn't choose a simple lie. Had her lie been simple, Sushant's reaction would have been less questionable. And we should be thankful here. Because all the monsters who conspired against Sushant and made his life a living hell have one thing in common: an arrogant attitude coupled with an extremely low IQ.
and a very limited imagination. They all lack awareness of what's plausible and what's laughable. Now, based on what she's written here, I don't want to read line by line. Basically, सुशांत ने ये वाला इतना बड़ा झूठ जो रिया ने बोला, why did he believe it? सिंपल सा लॉजिक है. He was such a nice, very soft-hearted guy, an individual who could literally believe in. Give me one second. All right, yeah, uh, good. He was such a good guy. He was such a pure soul. Uh, if somebody said something about his sisters, he would definitely have bashed him. बट जो रिया ने झूठ बोला, जो रिया ने एक एलिगेशन लगाई, वो उसका जो जो ऑर्डर ऑफ दैट एलिगेशन वाज सच दैट इवन इफ ही वांटेड टू, maybe he did overreact to make sure there is no police complaint. Maybe he wanted to safeguard his own sister by overreacting, is what I personally believe. Sideshare has a different opinion, but I believe sometimes you do act, sometimes you do overreact on certain things, uh, because you want to safeguard somebody. कई बार आप ऐसा रिएक्शन जानबूझ के भी देते हो ताकि जिसको लगे कि what, maybe he is serious about the allegation that I've put across for his family or his sister. तो इसलिए maybe they, that's how I see it. And because having known Sushant as much as you all know him, मुझे लगता है कि शायद सुशांत ने ओवर रिएक्ट किया ताकि इस चीज को, इस मैटर को यहीं पर दबा दिया जाए और खत्म कर दिया जाए, इज माय बिलीफ. बट आई डोंट नो how much of that is true. But इतना तो बिल्कुल क्लियर है, the sisters was definitely uh, very shocked to see. And obviously sister को अगर बता के करेंगे, then it would have looked like a drama कि ये क्या ड्रामा चल रहा है, right? So I'm sure he wanted to act in a certain way so that रिया को ये ना लगे, because understand this from that perspective that 4 दिन हुए हैं मिले हुए. Somebody who's known you for like less than 4 days, if he or she is putting an allegation on your family member, you will not say कि तुम झूठ हो, तुम गलत कर रहे हो, and you will, because this person who you don't even know might go out, speak in public, might have a police report against the sister, and that might even spoil his name further. तो मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है कि that's why he overreacted, so that he could protect his sister and he could show it to Rhea that, Rhea, you know what, I believe you, because he knew back end pe sister would always believe in him. ये वही sister है who understands somehow, maybe in a fit of rage, or maybe she felt bad कि एक outsider के सामने मेरा छोटा भाई मुझे कैसे ऐसे बोल रहा है. So that's how I can say, how I can see it. uh, and that's what I believe. But that's my kind of analogy around that. Now if you look at other things that she's mentioned in these, some of these, uh, this is a huge accusation, right? So, and baffled with what woman was saying about his beloved Priyanka, he must have been confused. How dare an understand Priya could have. So, I'm gonna skip some of these because these are like her own explanations around this. We know a lot about drugging, looting, threatening, isolating life, Sushant. So, what would someone like Rhea say to Sushant? The 21st, what are the possibilities? I'll tell you one possibility: threats. Major threats to him, and most importantly, his family. Threats that made Sushant shiver and maybe internally weep. Threats that scared him beyond any measure. Faced with such threats, he thought he had no choice but to keep Priyanka away. He had no choice but to accept Ria's existence at his own. Raising his voice against Ria seemed like a risky endeavor, a risk that he could never take because it could be detrimental to his very cherished family. So now what she's trying to explain here is it's quite possible, and I'm gonna throw a little bit more kind of meat to this. uh, हो सकता है कि रिया ने, we all know,
the druggy angle of Rhea Chakraborty. We know how uh, uh, you know bad she was and she is. Quite possible she might have even drugged Priyanka, and might have मैं बार बार words use करूंगा might, because these are all some of the theories that we can build based on the information available. It's quite possible that Ria might have drugged uh, Priyanka and might have created something against her, जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती might be threatening सुशांत. जैसे एक वो मूवीज में दिखाते हैं, राइट, कि ब्लैकमेल किया जाता है, वीडियोस बना लिए जाते हैं, उसके बाद फोर्स किया जाता है कि ये ऐसा ही चलेगा, ये ऐसा नहीं तो मैं तुम्हारे घर वालों का ये कर दूंगा, ये कर दूंगी and all that. So that's what could have happened, that he was left with no choice to protect his own sister. He had to get Priyanka out of his home, out of Mumbai. He needed to do that. I believe that his main priority was keeping his family safe and alive, even if it was at the expense of his own safety and happiness, and even if he had to get angry with his beloved sister. So that's what we believe that could have happened. कि अपनी बहन को बचाने के लिए he took such big risks, such big sacrifices, that he was really stuck between a rock and a hard place. uh, would it be extreme to think that Sushant would fake a fight with his sister? Is it logically possible that he would do this, that Priyanka would leave in shock? Is it possible that he would go to protect his sister? Yes, absolutely. That's my take on it as well. This guy who decided to do a press conference to expose those who harmed Disha, the young lady whom he'd known only a few months, he even decided to wait till her rights are performed despite complete danger. He was truly courageous and noble. So let's imagine what he could have to protect his sister and father. He would totally fake a fight if it meant that his sister would be safe, and he would totally endure all the torment, all the thefts, all the misery if it meant that his family would be sprayed. So it's quite possible that this could be the reason why Rhea Chakraborty was in Sushant's life. Some might ask, maybe Rhea slipped drugs into his water and that affected his judgment on Rhea's claim. Maybe the drugs made him think that he was in love with Rhea. While drugs could affect people's mental abilities, they don't change the essence of the person. Drugs, while they're harmful physically and mentally, don't change people's heart. Personal traits that can be examined in the photos and video below. I'm going to show you. Uh, I know you must have seen these photographs, you must have seen these videos. These guys sitting, meeting outside home, drinking tea, coffee. You would have also seen a video jahan par Sushant was walking the brother and sister. I think I might have the clip. Let me see if this is the clip. Yep. So let me play this here. Sushant sir. This gentleman who just opened the door for his sister. सुशांत सर एक फोटो दे ना. So this is how this man was. This is how caring he was. Uh, and if it was this cult, Varun, let me tell you, drugs and cult go in hand. If you remember the infant find a black cat in dark room, old fossil black magic uncle. Yeah. Definitely looks like she had some leverage on Sushant. Correct. Absolutely. And yeah. So, looking at these images, looking at these videos, looking at all the love he had for his sisters, it is very evident that there was something going on. There was something that maybe Ria was trying to blackmail him on. It is not possible for a man like Sushant to fall prey to this stupidity.
or this kind of a person like Rhea Chakraborty. Uh, let me finish off like couple of more, and then I'm gonna get you guys on the screen as well. During that time, like all times, when Ria, let me make it full screen so that you all can read it as well. Exactly, Monica. There was more than that story that meets the eye for sure. During that time, like all times, when Ria was present in his life, we know that Sushant was secretly drugged. He must have been feeling miserable and helpless, but his essence remained intact. That's another proof that Sushant couldn't and didn't believe Ria's lies. No amount of drugs could shake his holy love and respect for his family. For Sushant, that love was sacred and eternal. And that's what, I am 100% sure there was definitely something that Ria might have. And that's why, if you know, or you remember, she was the one who was Ria was the one who filed a case against the sister, and that she was. So there was definitely some bad blood between Ria and Priyanka. जिस वजह से ये केस भी फाइल हुआ, जिस वजह से they've not allowed Ria to be there at the cremation. So definitely family knew something about Ria, and I'm very confident that family has told CBI the same. Now tell me, now someone might ask, what about she spent the night? What does that indicate? What does that mean with the scope of the angle? So what Sher is saying is spending the night usually have one interpretation, but that's under one normal circumstances with normal people, and Ria is certainly not a normal person. We can't know what happened at that point of time. We can only speculate, and even speculation doesn't feel right nor respectful towards Sushant. Simply because the speculation involved a horrid person, that's Ria. Speculation can be unfair. Speaking conclusively, there must have been intimacy between them can be a terrible thing to utter because simply we don't know for sure. Sushant didn't tell him. Now, I'm going to kind of counter this because if you look at all the pictures, if you look at all of the pictures, and I will flash some of them actually, uh, you will see one commonality. Let me start from this particular picture. This picture, look at the way, Ria always kind of tries to overpower or take charge of Sushant. This is not somebody, who are like in a relationship. Look at the kind of attitude she has or always shown. And this, simple guy was always like smiling or showing his kind of, softer side to the public. Look at this. He was never into Ria, never. And that's what makes me believe. So look at this, that how she has been, and look at his smiling face always. He's like, he wanted to give his best face for the photograph, but at the same time, she's the one who's kind of always controlling, always bossy, always taking charge of Sushant and his life and his personal stuff. And that's what makes me believe that 100% this was something which she was conspired, she was actually plotted in Sushant's life to do these things. And that's what is, Ria's reality for sure. That they were, all working against Sushant, and for them, it was Ria who was placed or plotted to do certain things in Sushant's life, like get him out of where he was to a place where uh, I'll actually somebody pinged me a couple of days back. I will share this with you because I also thought about it after the fact. आप मुझे एक बात बताओ, आप सबको पता है कि सुशांत had a great love for dogs. चाहे वो फज हो, चाहे वो अमर अकबर एंथनी हो, चाहे वो कहीं पर भी बाहर भी देखो, तो he always had a love for dogs. Why would Sushant Singh Rajput, the person who could not even stay without fudge, uh, go to Mount Blanc?
अगर आप सबको याद हो माउंट ब्लैंक के बारे में, रईस भाई ने एक चीज बताई थी हमें कि उस कॉम्प्लेक्स में डॉग्स वर नॉट अलाउड. अगर डॉग्स वर नॉट अलाउड एंड एवरी डे डॉग हैड टू बी टेकन आउट, व्हाई वुड Sushant take up that place where his own love, where his own fudge would not be allowed? This is a good point to think about कि सुशांत को ऐसा क्या उस घर में दिखा कि he was ready to stay there without fudge. Sushant, fudge was only allowed during couple of hours during the daytime. उसके बाद he could not be, fudge could not be at the same place as the residents. So why would Sushant agree to that? और ऐसा घर लेगा क्यों? सुशांत को क्या ऐसी पड़ी है कि मुझे फद से दूर रहना है? So that was a great point, that it was all a plotted kind of activity. It was all planned. कि पहले इसको इसके डॉग से, इसके घर वालों, सिस्टर से, फादर begging. Imagine, we've all seen that he was literally begging कि मेरे बेटे के बारे में उसकी हालत कैसी है और मुझे टिकट भेजो, मुझे आना है और मुझे देखना. कहाँ होता है ऐसा? And Sushant had no control. He literally had no control because he was being controlled and actually run by this vicious lady. And yes, I'm going to call her vicious because she's the one who is responsible for whatever happened to Sushant. And I'm going to be not mincing any words on that. Uh, I'm gonna do a couple of more, screens, because next session we're gonna move to, Imtiaz Khatri and more people. So let me just read a couple of more lines that that side has listed. Uh, Let me actually do this one first. For Ria, did she really need to sleep with Sushant in order to cement her planned mission to control and ruin his? Did Ria need to woo Sushant? My answer is no, she didn't. Knowing what came next, Ria didn't follow a regular, natural looking plan with Sushant. Had she followed a normal plan, she would have tried to fake a warm approach to deceive him, his family friend. She would have befriended all his loved ones. She would have taken a long time proceeding to sink in her claws. She would have made her crimes too bluntly obvious. So this is her observation, and again, I somehow believe she was definitely sent to Sushant's house, Sushant's life, to do certain things, and this was all part of the strategy, all part of the plan. But what Ria actually did is that she went immediately on an attack mode. On the seventh day of knowing Sushant, she took his credit card, and read this as stole his credit card on the seventh day. She dared to voice her outrageous claims against the sister. She basically acted like a professional goon by end of the first week. अगर आपको याद हो, रईस भाई ने भी बहुत पहले हमसे एक बार सेशन में भी बताया था कि obviously she was like the big boss who was running कि किसको कैसा पैसा कब मिल रहा है सुशांत के अकाउंट से, who's gonna be the bodyguard, who's gonna be the cook, all that. And it just came to our knowledge recently through the investigating team of Republic TV that Kwan has been sending payments to Ria's bank account, a joint account she has with her mother. The first payment was in March, on 12th March, a month prior her meeting with Sushant. The second payment was exactly on 21st of April after she had the talk with Sushant that led him to fight with his own sister, or keep. She was paid on the exact day. So this point that शायद शेयर is bringing, I'm gonna take you back. मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ. Uh, if you remember, we did a session where we showed all these money transactions between Ria and Kwan and his and Ria's mom. सब लोग वहां पर, including myself, we had questions. What is this money all about? ये पैसा किस चीज के लिए मिल रहा है? Now, looking at this particular screen that you have right now,
Read very carefully. The first payment was in March, on March 12th. So the money that she received, was that like an advance payment for getting this started, getting to know Sushant, getting to be involved in his life, uh, and maybe the money that was promised to Rhea Chakraborty uh, definitely uh, was on a fast pace. Because obviously Kwan could not afford to bear her cost month on month and let her run as per her own wills and fancies. ये भी हो सकता है कि उसको जल्दी करने को कहा हो कि you know what, we will pay you money, but you need to speed up your game, lady. You cannot do it on your. The video of Sushant, Rhea, and Smita Parekh's NGO function clearly shows that they are not. Absolutely. अरे आप कोई भी वीडियो देख लो. Even though I'm not actually, I'm not. I don't even like or appreciate Ankita Lakhande. But if you do a comparison between, and we'll do one session around that as well. I will show you exactly, some of those clips, some of those pictures between Ankita and Sushant versus Ria and Sushant. Common factor being Sushant. I would assume that the if he's in love, definitely he would reciprocate that love. With Ankita, even though Sushant used to get a little shy, he was definitely the shyer one. But with the Ria, it was completely like a professional dealing. दोनों की आंखों में, दोनों की body language में, nobody can say or see that there was love. It was all like a conspiracy that Rhea Chakraborty was just placed or plotted in Sushant's life, and Sushant, uh, for whatever that reason is, was able to, being like he let her manipulate, him. Uh, so यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं, after she had a talk with Sushant that led him to fight with his own sister, 4 दिन, 4 days of knowing somebody, you create rift between the brother and sister. Now, I'll be the devil's advocate here. If I'm paying money uh, to somebody, say Rhea Chakraborty, I would need to see results. एक इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, लाइव एग्जाम्पल आपको देता हूँ. This fake thug from Delhi, the famous, the world famous advocate from Delhi. He went to Mumbai. I will not even say jail. Okay, he went to Mumbai. He came back and he was given some tasks. He might have been promised some money, and he was supposed to take a U-turn or create fake narratives, you know, and that's what he did immediately, right away. It's the same plot, it's the same process, it's the same set of people who pay money to create certain fake narratives, to create some kind of issues in somebody's life. It is all the same set of people, guys. So please try and understand. ऐसा नहीं होता है कि इन इन लोगों का दिल बदल गया, इन लोगों का कोई दीन ईमान बदल गया. ये लोग शुरुआत से ही ठग थे, ये आगे भी ठग ही रहेंगे. और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ, फ्रॉम रिया चक्रवर्ती साइड, the whole narrative has to go against the family, the sister. Please, please, please try and understand that. यही नैरेटिव चलने वाला है और यही नैरेटिव वर्कआउट करेगा in favor of Rhea Chakraborty. Now, if we also start believing and if we also show the data point, I'm telling you, मैं data में इसलिए बात कर रहा हूँ because that was the selling point of this fake thug. That अगर ये नैरेटिव चल गया, पहले इन्होंने एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की, सुशांत इज अलाइव.
based on the count of people, based on the number of people who are uh, SSR warriors who really are standing for Sushant, they did not let that fake narrative run for long, and they bashed him left, right, center. So वो कहते हैं ना, they came up with couple of plans. Let's have plan A, plan B, plan C. Let's have plan A first in action, which is Sushant is alive. उससे क्या होगा? केस एक्सटेंड होगा, वो 7 ईयर का सर्च का होता है, 7 साल ढूंढेंगे, 7 साल के बाद जब उनको मिलेगा नहीं, इट विल बी अ क्लोज केस एंड ब्ला ब्ला ब्ला. वो नैरेटिव लोगों ने चलने नहीं दिया. वॉरियर्स ने बहुत स्ट्रांगली उसको अपोज किया, फाइट किया, एंड definitely uh, that kind of caused them to stop. But partly उसको साइड पे थोड़ा थोड़ा चलाते रहते हैं. क्या हुआ वो? They were supposed to take people to कहाँ, केदारनाथ या बद्रीनाथ कहीं लेके जाना था उनको, वहां पर सुशांत को मिलाना था उनको. कहाँ गया वो सब? कहाँ गया वो सारा नैरेटिव? All thanks to all the people who bashed them, all the people who quashed that theory. So that went away. The second theory that they wanted to start was family. I've told you कि शुरुआत से they had this narrative, this plan in their mind कि अगर ये plan नहीं चला तो second plan we'll have to target the sister, we'll have to target the family, and that's what they are trying to do right now. उसके साथ साथ इन्होंने फैमिली के फ्रेंड्स, फैमिली से रिलेटेड लोगों को टारगेट शुरू किया. Again, I'm not going to shy away from taking certain names. Smita Parekh being one. I in the last session also I mentioned, I was being very quiet forever. I was not standing in support of her because, maybe there were certain things. But now, after all the nonsense being brought up in the public media, or especially these fake, narrative, whatever you want to call them, the conspirators, I would say now, of these fake narratives, ये पूरा का पूरा टीम ये अब फेक चीजें बना के, स्टोरीज बना के, लोगों को घर में बिठा के, ऑडियो रिकॉर्ड करा के, उसके बाद लोगों के नाम बुलवा के उनको टारगेट करना. यू नो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने सुशांत के नाम को यूज किया है. That's the second thing I'm gonna maybe tell you guys, but maybe I'll speak a little bit about that. लोगों ने सुशांत के नाम को यूज करके असाइलम तक लेने की कोशिश की, और असाइलम शायद मिल भी गया हो. And that's how these people are just targeting specific people, because they want कि जितना हम टारगेट करेंगे उतना हमें थ्रेट आएगा, उतना हमारे अगेंस्ट चीजें होंगी, हमारा केस और स्ट्रांग होगा. I will tell you guys one thing. I will tell you very honestly, I was being told that I should get the asylum myself. मुझे यहाँ तक बोला गया था कि तू जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह तू करता रहे, तू सपोर्ट इन चीजों में रहेगा, you will also be able to get an asylum. Asylum, for people who don't understand, I will tell you something. For people who are here uh, in the US, give me 1 second. Yes, I know. Thank you, Judy. I know about that, and I'm really looking forward. I'm really looking forward to that. Anyway, so let me clarify this thing. I am a prime example who was told to apply for asylum. मेरे साथ इमिग्रेशन अटर्नी के डिटेल्स भी शेयर की गई थी टू that I should file. I printed out those forms as well. This is let me take the screen out. Let me actually, since we've started this, I will continue from screen 25, but let me just invite a few of you because I know you had a couple of questions, and yes, I will explain to you everything today. What asylum? I will elaborate. Uh, this entire cabal, which is for in favor of Rhea Chakraborty, will do anything. They will target anybody and everybody. मेरा तो कोई रोल भी नहीं है. I have nobody in this whole bigger picture of events and all that stuff.
I was kind of targeted, threatened. But at the same time, the same set of guys, one of them sitting here in US, who is, I have no idea what is his agenda. I have no freaking clue about that. But all he wanted to do was, target certain people, specifically, Smita Parekh and Nilotpal and whatnot. These guys did so much should do the asylum, and I was like, somehow I did not have a good feeling around that कि यार सुशांत के नाम पे ये सब कुछ करना and all that. uh, so for people who want to understand what's an asylum basically ये है कि if you're being threatened from your home country and if you are in a different country, you want to apply for asylum ताकि uh, आपको उस कंट्री की परमानेंट रेजिडेंटशिप या सिटीजनशिप मिल जाए, ताकि आपको इंडिया वापस ना जाना पड़े, बिकॉज द इमिग्रेशन प्रोसेस इन यूएस इज वेरी वेरी स्लो. और यहाँ पर इस चीज का फायदा उठा के अपना लोगों को टारगेट करके उनसे थ्रेटन कॉल्स लेके या उनसे धमकियां लेके अपने अगेंस्ट केसेस फाइल करवा के दे जस्ट वांट टू शो दैट वी आर स्पीकिंग द ट्रुथ. And while we are speaking the truth in this country, we are being targeted in our home country, and now we cannot leave this country. And now we want asylum. Or uske upar, these people have the audacity not only to file it, claim that asylum. I'm pretty sure they have already got the asylum. और आज तक मैं इसलिए भी चुप रहा क्योंकि I really really wanted to stay out of all the muck. uh, Somebody who is in US and somebody who is part of the whole cabal, somebody who wants to act very smart, but eventually, I'll tell you guys very honestly, somebody who is an integral, what do you call, right hand man for the Delhi ka thug, जो दिखाते ये हैं आपस में कि they are like against each other, but they are like एक दूसरे का खून एक दूसरों की नसों में जिनका दौड़ रहा है, ये वो लोग हैं. I know I'll be targeted again now after I've said all this. And the reason I'm saying this is because the family is now going to be on the hit list, is going to be the next target. Smita के साथ जो हुआ, जैसा भी हुआ, that was all part of their conspiracy. They will continue to target her. Now they will also target me. They will definitely do that, and I give a damn about that because end of the day, अगर कुछ गलत करो तो डरो. That's what somebody told me. जब किया ही नहीं तो जो करना है, जो खाड़ना है, फेक नैरेटिव्स चलाने मेरे लिए भी चलाए. आई गिव अ डैम अबाउट इट. $6 million भी मुझे मिला, आइलैंड भी मुझे मिला, तो अब मुझे कुछ और भी मिलेगा तो मिल जाएगा. दैट्स ओके. But now family needs to uh, really be protected, guys. Is all I can say. As I said, I'm not here for the family. All I'm trying to say is till the time we don't see anything against the family, uh, I personally would not take anything against that, and I'm sure a lot of you also now can back out by saying they're not guilty. Absolutely. So using Sita and Nirotma's name and how they can't back out by saying they're not guilty. Absolutely. He said you're a fishy guy. Absolutely, I'm a fishy guy. मेरा तो इतना बुरा हाल है वरुणी. What do I say? I uh, मेरी I'll tell you. I'm here with my family, and my family always keeps on worrying about the nonsense that I'm part of. I met somebody yesterday, who is an SSR warrior who listens. Actually, you'll also get to meet, the couple very soon. We'll be doing a SSR kind of special in the next few days. He's a singer, and he met me yesterday. He and I talked. हम अगर वो अभी भी सुन रहे हैं तो उनको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ कि जब वो आएंगे आप उनसे भी सुनेंगे कि वो कब से फॉलो कर रहे हैं सुशांत के केस को. और इतने फेक स्टोरीज, इतनी फेक नैरेटिव सुन के हर किसी का दिमाग खराब हो जाता है. अ, ये ऐसे लोग हैं जो सुशांत को जानते तक नहीं थे, जस्ट लाइक मी, जस्ट लाइक मेनी ऑफ यू. एंड दीज गाइज आर नाउ simply targeting, simply targeting Sushant and his family. And they will eventually come to
uh, Sushant's brother-in-law as well. Um, like I said, मेरे पास एक छोटी सी एक ऐसी रिकॉर्डिंग है, आज से कोई 5 या 6 महीने पुरानी होगी, या ऑलमोस्ट लाइक लास्ट ईयर की, जहाँ पर ये इंसान साफ ये बोल रहा है कि मुझे तो फैमिली का पता है, फैमिली ही इन्वॉल्व है, and they've been running different narratives. They were trying to run different narratives all this while because they wanted to see which narrative works, which narrative connects with the with the people. ये इस तरह से ये ऑपरेट करते हैं. They have backup A, backup B, backup C. This is how these guys work. और मैं इसलिए uh, because end of the day, uh, unfortunately, I was part of their kind of gang, I would say, for some little time, and I could read them. I could understand their modus operandi. I could understand how they operate, what all nonsense they can do, and किस level तक ये गिर सकते हैं. Exactly. Hi, Venki. I see Venki in the chat as well. OP Singh, अरे ये तो सबको target करेंगे, boss. They will definitely target everyone. Now, the fake narrative business that has started, it is being backed up. शुरुआत में जब ये fake narrative शुरू हुए थे, they started by having लेस एजुकेटेड कहूँ मैं, या कहते हैं ना थोड़ा सा, I want to be very mindful of the words that I use. That's why I'm being very, very conservative in my words today. But basically, these are people who did not have a good kind of, background and all that stuff. Now, phase B for them, the project that they're running for phase B, they're trying to get people who have more, they have better articulation of thoughts, they have better words to use, sophistication involved हो गया है अब उनकी लैंग्वेज में, so that they can start building up that confidence level again, कि अब जब ऐसे लोग बोल रहे हैं तो शायद उससे इम्पैक्ट ज्यादा आएगा, और वो अनपढ़ गवार लोग जो जो पहले फेक पेडलिंग करते थे, दे आर ट्राइंग टू यूज अदर पीपल to create that fictional kind of story. And this is how, uh, Judy, I believe, I have a very firm belief in that. I am a very spiritual person myself, and I know karma will, but it's very important to bring all these facts out in front of everyone. लोगों की आंखें खुली रहें, कान खुले रहें. अ, और अब तो मैं ये कहता हूँ, अगर आप लोग उनको व्यूज दे रहे हो तो जाके मुंह अपना खोलो और वहां उनको रोको ये बकवास करने के लिए. एंड इफ नॉट, देन सिंपल सी बात मैं सिर्फ ये कहूंगा कि फेक नैरेटिव्स को जो जो सपोर्ट कर रहे हैं लोग, उन लोगों को अब इस प्लेटफॉर्म पे I'm gonna stop. I will see people in the background, and I'm gonna not take certain people, and they will know for a fact that how important it is right now to keep, चाहे कम लोग आए, चाहे कम लोग सुने, चाहे कम लोग पार्टिसिपेट करें, बट वी नीड ओनली दोज जेन्युइन एसएसआर वॉरियर्स हु रियली आर हियर फॉर द मूवमेंट. अगर आप लोगों ने फैमिली और फादर और ब्रदर इन लॉ इन सब के ऊपर फिंगर्स अब उठानी है, यू हैव नो प्लेस. यस, यू हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस, आस्क देम द राइट क्वेश्चंस. ये नए नए नैरेटिव, नई नई बकवास चीजें लाना, uh, again, I somebody did ask that, Venki, and I will definitely confirm that. Let me just take two people on the screen. All right, I am okay. Hey, Monica, and hello, Bindu. Hi. Hi, Varun. Hi. Varun, I actually wanted to discuss something. Yes. It was just at the back of my mind. I thought I'll come on your show and ask what you feel about it or what the viewers feel. So, yesterday I was actually watching Mr. Sanjay Patnaik's video, and he was speaking a little about, cults and evil sea symbols and all that, and how they have been progressively being used in Hollywood films. So, do you feel like there's any kind of cult that going on in Bollywood as well? I mean, like.
maybe in the background or something. Yeah. So I have my own personal take on that, but I'll Hmm. let others also say whatever they feel. Yeah, yeah, There is of course. definitely something in the background, but Sure. a lot of it has to do with some of the conspiracies being leveled. I'll Mm. tell you something very honestly. Yesterday, somebody sent me news Okay. that Bill Gates was arrested for child trafficking or something like that. All right. Yes. Yeah. Yeah. Okay. Now I was shocked. Being in US, यहाँ पर बैठ Yes. के, I'm like, what the hell? This could have been like the biggest I know. news, not only for Yeah. US but also for people around the world. But Yeah. We didn't think about it, right? But it was there. हाँ, तो ये So. न्यूज़ आई और मैं देख रहा हूँ यार ये मेरे को क्यों नहीं पता लगी, ये कैसे नहीं है, ये कहाँ पर न्यूज़ एंड it was all Mm. kind of a fake conspiracy. The person who was arrested 2 years ago was an Hmm. engineer at Bill Gates' house, with some kind of, pornographic. Now, see, Right. end of the day, you can hire somebody and he does something. It's not the same. Not But in a लोग position to इस तरह से control them. Yeah. conspiracies, this is how it Yeah. starts. And Yeah. and again, even with Bill Gates, the other story that popped up was, Mm. child trafficking mein he is involved. And I was like, yeah, kahan se Right. aaya? So all this nonsense, right, comes in Yeah. from a lot of sections. And if you remember, Mm. there was one video that was Hmm. again today. Even though I'm not targeting an individual, but somehow all the examples I'm getting is for this idiot Yeah. I who's mean, sitting in it's Delhi. just He yeah. shared Yeah. a video of somebody jumping out from the Buckingham Palace and saying that Right. Queen Elizabeth was firing or something. Oh, And I read about that. Yeah. Yeah. I correct. read about that. Yeah. And that Yeah. turned out to be a hilarious kind of a skit or something that I somebody know, made. right? It was so weird. Exactly, but that's how these conspiracies start. और इसीलिए मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी ये होती है, Mhm. last few days, right, I've been off, but it's not that I was completely off. Okay. People were still calling and talking and occasionally I was Mm. chatting and they're coming Mhm. up. Now, Venki just told me something. Somebody else also pinged me, on DM, and I still have Mhm. to validate this nonsense that has started, that OP Singh meeting Khatri. So Oh all I God. can say is, these are all conspiracies. This is how it will start. Like Hmm. I said, मुझे तो अभी ये पता भी नहीं था कि and I'm very confident. अगर मुझे Yeah. मौका Yeah. मिला, I will Mm. definitely play this audio clip. एक छोटी सी clip है, Mm. less than a minute, where this Mhm. idiot himself is saying कि मुझे तो पहले से ही पता है कि Sushant's family is involved. Yes, sister is Oh involved. yeah. Yeah, I saw that and I was like, what is wrong with this guy? Like he needs a psychiatrist. He really needs Definitely. help. There's He needs something wrong with him. electric shock. He needs Oh electric shocks and God. should be He's locked. on and on. Yeah. Yeah, yeah. Okay. So So, that's yeah, all right. I just wanted to talk about the cult part of yeah, yeah, it. yeah. Now we'll Just talk about, there's a lot of other topics as well. It's a long list. yeah. I really want to quash and really want to clean up a little bit on the adrenochrome. I'll be very honest about it. Hmm. A Hmm. lot of things were said on my platform. I've Hmm. been avoiding I that know. topic, but I cannot avoid it because every now and then this topic comes up. Somebody is again starting some stupid narrative around adrenochrome. So I will Yeah. definitely, clean that up, that mess also. But Yeah, but simply, Varun, you are doing a good job. I mean, I see you there, and it's like you are very firm, and I'm just so proud of you. thank I you for really that. But am. please, Yeah, yeah, the only thing I would tell you and I would encourage all of you to do yeah, is, if you are hearing any fake narrative, guys, don't believe, but stop them. And then yeah. right now, the thing We have to is, question them. We have to question exactly, them. Yeah. don't, one of Don't just the take it in. exactly, Yeah, exactly. yeah, That's what I'm saying. That not only question, right? Question, yes, yeah, 100% question them, but stop them from spreading these lies. Tomorrow, yes, if they say, absolutely. that father knew everything and they're gonna start targeting father, I swear to God, I was again, I can't say everything here on the live, It's too much. but my blood boils like anything. This is not how we all started. It's been 1 year now. People are not getting any kind Yeah, of updates, so they have to just create something new, create something. and Yeah, that's what yeah. they're doing.
and we have to. And imagine the pain that the family is going through. Like they already lost him, and now they have to hear all these things. It's Yeah, so heartbreaking. It's so heartbreaking. I can't imagine. Can't exactly. imagine what they're going through. Right, right, right. Horrible. Oh, yep. Okay. Okay. Yep. Sure, I'll take Okay. few more because it's Sure. been almost 1.5 hours, so I'm going to continue Sorry. this. But Yep. thank you so much. Sure. Thank Sure. you. Sure. All right. All Okay. right, बिफोर आई टेक बिंदु जी आपको, मैं एक ये ओम शांति जी आए हैं, एक तो ये लोग उल्टे नाम यूज करके उल्टे सीधे कमेंट्स ही करने आते हैं, सो विच इज फाइन. He was okay till he was on your platform. No, Om Shanti, he was not okay. We were all very, very inquisitive. We were all very much worried about, the things that were coming out of his mouth. So we all wanted to know. The moment, we understood it was fake, his platform say, we said goodbye to him. We don't want anything just for the conspiracy. I could have kept going on and on and on. ना व्यूअर्स की कमी होती, ना कॉन्स्पिरेसीज की कमी होती, जबकि मैं तो शुरुआत से कह रहा हूं कि यहाँ पर तो मैं आई एम नॉट इवन अ ट्रेडिशनल यूट्यूबर एंड आई डोंट सी अ फ्यूचर एज अ यूट्यूबर हियर, बट एट द सेम टाइम अगर मुझे ये करना होता आई वुड हैव कंटिन्यूड द नॉनसेंस. सो फॉर यू आई कैन ओनली से, पहले तो आप असली नाम लेके सीधा बात करने आए, आई विल आंसर यू ऑन योर फेस. At the same time, he doesn't come on my platform because I've done enough exposes on him and his stupidities, and I will continue to do that. And not only him, all his chomus as well. The different chomus that he has, that they work for him and show as if they are individual. अपने आप को वो दिखाते हैं कि हम तो अकेले ही हैं, हम तो अकेले हैं. ये सब जो चोमूज इकट्ठे काम करते हैं, इनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि till the time now this platform is there and there are people on this platform who are here for Sushant and his family and Disha, we will not let these conspirators kind of get successful. So we are going to be the blockers. uh, Even though हमारा time बहुत खराब होता है, but that's what it is. All right, enough for you. Om, yes, Bindu ji, please go ahead. क्या कहना चाहती हैं आप? जय हिंद, जय भारत, जय जय हिंद. श्री राम सबको, सुनने वालों को, देखने वालों को, आपको वरुण। Thank you. मैं सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट अपनी एक सोच रखना चाहती थी। हाँ जी. हम सब जब भी कभी पास्ट में जाते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, जो हमारी जिंदगी में कोई भी घटना घटी हो, ऐसा हम में से कौन है जो कभी ये नहीं सोचता कि काश मैंने उस समय ये किया होता या कहा होता। तो जो ये लोग फैमिली पर सवाल उठाते हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए, वो भी तो कभी सोचते होंगे, नीतू दी सोचती होंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल काश मैं उस दिन ना जाती या मैं एक दिन पहले वापस आ जाती। तो कोई भी आइडियल सिचुएशन नहीं होती और प्रेजेंट में हम इतना चीज को एनालाइज नहीं कर सकते। आगे जाकर जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं, तब सबके मन में, हम सबके मन में किसी ना किसी घटना को लेकर कोई ना कोई रिग्रेट होता ही है कि काश हमने ऐसे रिएक्ट किया होता। Yeah. दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि इस टाइम सबसे ज्यादा इजी टारगेट फैमिली ही है, क्योंकि जो कल्प्रिट्स हैं जिनके नाम आ रहे हैं, रिया है या बाकी है, वो तो सब बच जाएंगे अगर फैमिली पर सब कुछ आ जाता है। फैमिली मैटर था और फटाफट से केस खत्म। तो ये सोचने की बातें हैं, हम सबको सोचना चाहिए। मैं भी सब प्लेटफॉर्म्स पे जाती हूँ, सबको सुनती हूँ, लेकिन फाइनली जो मुझे ठीक लगता है वही मैं सोचती हूँ, वही करती हूँ। बस मुझे इतना ही कहना है। राइट, राइट, राइट. नहीं, एब्सोल्युटली. और बिंदु जी, आपके मैं फर्स्ट जो आपने बात की, उसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा, सबको बल्कि एग्जांपल देता हूँ. मेरी इनिशियली मेरी फर्स्ट टीम जो मैं यूएस में जब कर रहा था, मेरी बॉस के कजन, ही वाज सपोज टू बी 9/11 को was supposed to be in New York in the Empire, वहां पर बिल्डिंग में होना था उनको. And unfortunately, he had a food poisoning a day ago. उस वजह से वो वहां बिल्डिंग में नहीं पहुंच सके. And look at the irony कि अगर वो होते, तो it's quite possible, that's what my ex-boss told me, that we would have lost him. तो जिसको जो जैसा करना है, जो होना है, उसके साथ वो होना है. बट अगर हम फेक स्टोरीज बनाएं और अगर हम इस तरह की कोई नरेटिव दें कि व्हाट, मैं तो वहां था और मैं तो ये था, जैसे अभी ये लिख रहे हैं नवीना जी, व्हाट नॉनसेंस, डजंट ही वर्क वरुण. बिल्कुल. तो मैं ये इस आईएस नहीं, आईएसआई नहीं, सॉरी, क्या था ये, आईबे के ऑफिसर जो कि एक एक यूट्यूब के चैनल पे आके इतने फेक नैरेटिव स्प्रेड कर रहे थे,
इनके बारे में तो मैं जितना बोलूं उतना कम है, पर आज की डेट में इन्होंने फिर वही सब कुछ शुरू किया और लोग लोग सुन रहे हैं, मान रहे हैं। मुझसे आके भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यस, यू हैव अ राइट टू आस्क द क्वेश्चन, बट आप कम से कम थोड़ा सा खुद भी सोचो कि ये लोग जो बोल रहे हैं उसके अंदर जरा सी भी वैल्यू है। वो तो कुछ भी बोलेंगे, यू नो। वी हैव टू स्टॉप लिसनिंग टू देम, वी हैव टू कंप्लीटली इग्नोर देम। और फिर देखो प्लान बी से प्लान सी कैसे चेंज होता है, उसके बाद प्लान सी से प्लान डी, यू नो। ये वही बेवकूफ लोग हैं जो अपने आप दारू पी के नीचे गिरे हैं, मुंह तुड़वाया और ये कहा गया कि मुझे कहाँ है वो सीबीआई, कहाँ है वो एफबीआई जो मेरे दरवाजों पे आ रही थी, कहाँ है वो यू नो सारे लोग जो मेरे अगेंस्ट केसेस फाइल हुए थे, वो कहाँ है केसेस। ये सब लोगों के बीच में एक हिस्टीरिया बनाने के लिए, डर बनाने के लिए लोग बोलते हैं। बहुत सारे लोग उससे डर जाते हैं, बहुत सारे, मैं भी डरा था, नो डाउट अबाउट इट। आई वाज आल्सो अ लिटिल स्केयर्ड। मेरी फैमिली अभी भी स्केयर्ड होती है कैसे, बट एट द सेम टाइम दीज फेक स्टोरीज, दीज फेक केसेस अगेंस्ट, ये उसको नोटिस पहुंच जाएगा, वो उसको वहां पहुंच जाएगा। अरे यूएस तो छोड़ो, इंडिया में इतने लोगों के अगेंस्ट आप बोलते हो, किसके अगेंस्ट आपने केस भेज दिया? सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू काइंड ऑफ ब्रेक दिस, दैट आई विश एंड आई प्रे। और स्पेशली आप जैसे बिंदु जी, आप जैसे कहती हैं और बड़ी ओपनली, एंड आई एम रियली, दैट्स व्हाई यू नो वेरी अप्रिशिएटिव कि आप जैसे लोग बहुत जरूरी हैं जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं। यू गाइस रियली नीड टू स्टॉप पीपल फ्रॉम स्प्रेडिंग लाइज। सिर्फ सुनना नहीं, उनके ऊपर एक्ट करना भी अब जरूरी बहुत हो गया है। जैसे कि अभी ओपी सिंह के ऊपर फिंगर्स उठ रही है, सिस्टर्स के ऊपर उठेंगी, यू नो। अब क्या सिस्टर की क्या लाइफ नहीं है क्या? मैं तो सिंपल सा लॉजिक पूछूंगा, राइट? किसी की फैमिली में भी डेथ होती है, डज दैट मीन कि वो अपने बच्चों के बर्थडेज मनाने बंद कर दें, या अपनी माइलस्टोन्स यू नो ना करें, या आगे फैमिली लाइफ जो है उनकी वो ना देखें? आई मीन कुछ कुछ करेगा तो क्या उसके ऊपर सिर्फ यू नो क्वेश्चनिंग ही होने वाली है? सो दिस वरुण इज जी, मैं तो ये भी सोचती हूँ, हम सब सुशांत से कितना प्यार करते हैं, हमारा कोई रिश्ता नहीं, कुछ भी नहीं। या हम सब ये दावा करते हैं, मानते हैं, अगर दावा नहीं भी करते तो सोचने की बात है, वो चार बहनें जिनका एक ही भाई, क्या वो नहीं करती होंगी? मतलब हम ही सब कुछ है, हमारा ही प्यार सब कुछ है, मतलब ये कोई सोच भी कैसे सकती या है? ये मुझे बहुत है। और ये जो आपने आज अजाइलम की बात बताई, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से नहीं सुनी दिया तो इतना। तो थैंक यू, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। थैंक्स ये बताने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन हम सबके लिए, नेसेसरी के लिए जरूरी है, ताकि हम सबको भी सच्चाई पता हो, पूरी तरह पता हो सकते। तो वेंकी जी का स्पेशल थैंक्स, क्योंकि उन्होंने मुझे मैसेज में, मैंने लिखा था कि किसकी बात हो रही है, एज आई वाज अनअवेयर, तो उन्होंने मुझे बताया। तो ये आंखें खोलना हम सबके लिए जरूरी है। क्या हो रहा है हर जगह, आंखें रखना जरूरी है, सबको भी सुनना जरूरी है, पता चले क्या है। लेकिन करें अपने दिल की, माने वो जो आपको, आपका एनालिसिस करे, ठीक लगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा। और यू नो सिर्फ वेंकी, वही मैं, वेंकी एक एग्जांपल बन जाता है, वेंकी एक ऐसा नाम बन गया है जो जो मैं आई एम सो प्राउड ऑफ वेंकी। आई विल बी, मैं बड़ी बार बोल चुका हूँ, अ, ऐसा नहीं है कि कोई वो मेरे टीम का मेंबर है, या वो ऐसा नहीं है कि कोई मेरे लिए कुछ कर रहा है। वो सिर्फ सुशांत के लिए खड़ा है, यू नो, ही ट्रीट सुशांत एज हिज ब्रदर। और हमें वेंकी जैसे ही लोग और भी चाहिए, यू नो। देयर इज शिफाली, देयर इज दीक्षा, देयर आर सो मेनी अदर पीपल, आप हैं, यू नो। यहाँ हमारी स्क्रीन पे श्वेता यहाँ बैठी हैं, हु आर देयर ओनली फॉर सुशांत। दे डोंट रियली केयर कौन वरुण, कौन कोई, यू नो, प्रशांत, कौन क्या। दे डोंट रियली केयर, दे आर हियर फॉर सुशांत। और सुशांत के लिए जब वो कुछ गलत देखते हैं तो उनका उतना ही खौलता है खून, जो बहुत जरूरी भी है। एंड आई एम रियली रियली प्राउड। सो थैंक यू एक बार फिर से, यू नो, वेंकी का नाम लेने के लिए। और अदरवाइज ऐसे और भी बहुत सारे वॉरियर्स हैं कि बहुत जरूरी है, जिसको अप्रिशिएट करना भी बहुत जरूरी है। जरूर, जाने से पहले एक छोटी सी बात और रखना चाहूंगी, अभी अभी मेरे दिमाग में आई है, हाँ कुछ जी, बोलो। नया करके शुरू हुआ है कुछ दिन पहले। आपकी थोड़ी ना तो डिस्टरबेंस आ रही है, एक मिनट, अभी थोड़ा आप यहाँ बहुत फोन तेज के पास। बारिश हो रही है अब, थोड़ी ठीक है अगर ऊंचा बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, बोले। तो उस प्लेटफॉर्म पर जो प्रशांत जी हैं, उन पर भी सवाल उठाया गया कि उन्होंने ये कहा आनंदी रवन डेड है, जबकि वो अलाइव है। हाँ तो मतलब मुझे, जब उन्होंने ये बात कही, वो कितने महीने पहले की है, हाँ इंफॉर्मेशन धीरे धीरे आती है, मतलब उसके लिए उनके बारे में इतना उल्टा सीधा बोला गया। मैं ये नहीं कहती कि कोई अब आया है मूवमेंट में या बाद में आया या पहले, उससे उसकी क्रेडिबिलिटी चेंज होती है। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि इंफॉर्मेशन समय के साथ आती है और चेंज भी होती है।
तो उसके लिए किसी को दोष देना भी गलत है। किसी की जो पार्टिसिपेशन है इस मूवमेंट में, जो भी उनका योगदान है, उसको राइट। छोटा बताना बहुत गलत बात है। नहीं नहीं, मैं यहाँ पर इसलिए आई विल टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर, मैं सबको एक बार ना लाउड एंड क्लियर सुना देना चाहता हूँ। जो प्रशांत के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है ना, उसको तो मतलब सुशांत का नाम लेना ही बैन होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि जो प्रशांत ने किया है इस मूवमेंट के लिए, जो प्रशांत ऑफलाइन रह के ही इज वन मैन जिसको ना तो स्क्रीन स्पेस चाहिए, ना तो उसको कोई पब्लिसिटी चाहिए, ना उसको किसी तरह का इसमें कोई फायदा हो रहा है। यू नो बहुत देर हो गई मेरी वैसे तो बात हुए, पर जितनी भी जब भी मेरी बात होती थी या हुई है, यू नो वो फादर के लिए आई थिंक ही इज लाइक रॉक सॉलिड फॉर सुशांत डैड राइट नाउ। जो जो प्रशांत जिसने एक तरह से अपने जैसे भाई मानता है, राइट, एक तो सेम जगह से है सुशांत, भाई मानता है, और लिटरली उसने इतनी सारी, जहां तक रही वो इंटरव्यू की बात, राइट, उस इंटरव्यू के अराउंड बहुत सारी ऐसी चीजें थी। और जहां तक मुझे याद है, जहां तक मुझे, मैं एक बार फिर वीडियो जरूर देखूंगा, मुझे जहां तक लगता है प्रशांत ने एक चीज जरूर बोली थी कि आनंदी धवन का मोस्ट प्रोबेबली इज नो मोर, बट नॉट 100% श्योर। तो उन्होंने वो क्लियर किया था। अभी आनंदी है कहाँ है नहीं है, वो जब तक कॉन्क्रीट एविडेंस हाथ में नहीं आता तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। बट आधी से ज्यादा मैं आपको वो बता रहा हूँ, आपको एक एक मैंने शायद सेशन में बोला भी था, जब प्रशांत का वो सेशन हुआ था, इमीडिएटली इमीडिएटली अभी लाइव चल रहा था, और हम दोनों को, मुझे और प्रशांत को, हजारों की काउंट में, मतलब कम से कम 15 से 16 लोग इकट्ठे शुरू हुए पहले इंस्टाग्राम पे, और लोगों को पिंग करना शुरू कर दिया कि आपने एग्नेस के बारे में बात क्यों करी, आप एग्नेस के बारे में क्या जानते हो, क्यों कर रहे हो, बंद करो इसको, अपने इंटरव्यू को डिलीट करो, आपके खुद के घर में कोई लोग नहीं है, ये है। हमें इतना ज्यादा टारगेट किया गया था, और सपोजिटली ये वो एग्नेस के फ्रेंड्स थे। और उसके बाद मैं कब से उनको ट्राई कर रहा हूँ कि अब उनमें से कोई आके बात करे, कोई बताए क्या हुआ क्यों नहीं, नोबडी। तो हम इतना ज्यादा, और मेरे से ज्यादा तो मैं कहूंगा प्रशांत टारगेट हुआ है। तो प्रशांत के ऊपर ये जो लोग उठा रहे हैं, वो आप ये देखें, इन लोगों की खुद की कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं, सिर्फ जिनकी थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी है उनका नाम यूज करके थोड़े से और व्यूज ले लेंगे, या थोड़ी सी अपनी वो बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे ही किसी के अगेंस्ट बोलेंगे तो ऑब्वियसली लोग जाके सुनते हैं क्या हुआ क्या। जैसे आप आके बोली, वैसे ही बहुत और भी लोगों ने उस टाइम बोला था मुझे ऑफलाइन भी, कि प्रशांत तक को नहीं छोड़ा, और इन्होंने नहीं छोड़ना किसी को। इन्होंने स्मिता पारिक से लेके नीलोत्पल, ऑल, जिसको भी देख लो, इन्होंने टारगेट करना ही करना है। सो इतना तो मैं आज इतना जरूर बोलूंगा कि प्रशांत के ऊपर उंगली उठाना एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी कल को। जब भी, जैसे एडवोकेट शरण जी कहते हैं, जब भी इस केस का एक कंक्लूजन होगा, आई थिंक इफ देयर वुड बी वन फ्लैग बेरर ऑफ दिस होल मूवमेंट, आई रियली बिलीव कि प्रशांत कुमार वुड डेफिनेटली बी देयर, जो इसको लेके जाएगा टू अ कंक्लूजन। सो दैट्स ऑल आई वांट टू से अबाउट प्रशांत फॉर श्योर। थैंक यू वरुण जी, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। थैंक करेज टू ऑल ऑफ यू, और सब एसएसआईएम से हाथ जोड़कर वही प्रार्थना है, जुड़े रहिए, इकट्ठे रहिए, हमें थकना नहीं है, हमें हारना नहीं है। यू। जय हिंद। जय हिंद, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, हाय श्वेता, बहुत दिनों बाद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हेलो वरुण जी, कैसे? नमस्ते। नमस्ते, कैसी थैंक हैं यू आप? सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, एकदम बढ़िया हूँ मैं। एंड आज का सेशन इज रियली वेरी नाइस। यू कम अप विथ वेरी गुड पॉइंट्स, especially when it comes to family. You know how I feel, you know what I feel when it comes to sisters, when it comes to father. So बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने रखे हैं आज, और बहुत स्ट्रांगली आपने ये बोला है कि सिस्टर्स को, जीजा को या फादर को इस तरह से कोई टारगेट ना करे, और नहीं करना चाहिए। मेरा बस यही कहना है कि जस्ट ट्राई टू स्टेप इनटू दिस शूज एंड सी हाउ इट फील, Yeah, how it feels of losing a brother, the only brother, how it feels of losing the only son. exactly. जितना हम लोग गम में हैं, जितना हम दुख में हैं, उससे 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा दीदी लोग होंगी, पापा होंगे। So before commenting, before saying anything to anyone,
just make sure that you feel their emotion, you feel how they feel. If they are not coming up on any social media platform, try and understand कि वो grief में है. 1 साल हो गया है, 1.25 साल हो गया है भाई. एक भाई गया है उनका, एक बेटा गया है. आप कैसे उम्मीद रख सकते हो कि वो नॉर्मल हो जाए? How things can be normal? Certainly Exactly. not. Yeah. So बस मेरी यही humble appeal है सभी से that let's not target the family like this, and let's stay focused and glued on our aim, which is justice for Sushant Singh Rajput. And हम अपना काम करें. हम एसएसआरियंस क्यों आए थे इस मूवमेंट में 1 साल पहले? हम इसलिए आए थे बिकॉज वी वांट जस्टिस फॉर सुशांत. वी आर नॉट हियर टू टारगेट द फैमिली. फैमिली को जब लगेगा, जब उन्हें ठीक लगेगा, दे विल कम अप एंड स्पीक. हमें Correct. अपना काम करना है एंड वी विल बी डूइंग इट. एंड वेरी लाउड एंड क्लियर हियर आई एम सेइंग, किसी भी एसएसआरएन को इस तरह से टारगेट किया तो मैं हरदम आवाज उठाती हूँ और उठाती रहूंगी. आई विल नॉट स्पेयर एनीवन. Correct. किसी को भी अगर मलाइन किया, जेन्युइन वॉरियर्स हैं यहाँ पे, लेट्स नॉट टारगेट एनीवन. एंड बात रही बहरहाल, आपने स्मिता दी के लिए भी बोला, बहुत अच्छा वो क्लियर आउट आपने वो एयर करी है. एंड जब आपको पता नहीं है व्हाट शी हैज गॉन थ्रू फॉर द Exactly. लास्ट 1 year, पीपल शुड नॉट पॉइंट आउट, नॉट नेवर नेम इट. Correct. तो जब तक आपको रियलिटी पता नहीं है, प्लीज आप नहीं टारगेट करें, ना उनकी फैमिली को, ना उनके फ्रेंड्स को. बस मैं ये Hmm. इतना ही कहना चाहूंगी वरुण जी. नहीं, एंड एब्सोल्युटली. और थैंक बिल्कुल या आपने वो सही कहा, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली फाइट कर रहे हैं, बिना मतलब के उनको टारगेट किया जा रहा है. आई मीन, यू आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट. ऐसा नहीं है कि या आपको नहीं टारगेट किया गया. तो हर किसी या को बिना मतलब के टारगेट किया जाता है, एंड दैट्स यू नो anyways. Yeah, thank you Shweta, and keep roaring. Really proud of what you do and what Prashant and what Insaf SSR is all about. So थैंक thank यू you. सो मच वरुण जी. All गुड right. डे. Good गुड day. नाइट Thank टू you. यू. Anji, good night. All right. Suvarna ji, Jai Hind, Jai Bharat. Yeah, can you hear me now? Yes. या जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम. Yes. वरुण भाई, मुझे यही बताना है कि क्या चल रहा है हमारे सिस्टम में. सचमुच समझ में नहीं आ रहा. इट्स मोर देन 1 year. अभी तक सुशांत को जस्टिस नहीं मिल रहा. वी ऑल आर फाइटिंग फ्रॉम लास्ट 13 months एंड कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है. पता नहीं ये क्या हो रहा है एंड वाई. मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है रिया को अभी बेचारी क्यों दिखा रहे हैं ये लोग. शी इज वेरी गरीब बेचारी, उसके पास अभी पैसा नहीं है. व्हाट नॉट इज कमिंग ऑन यूट्यूब. मतलब पता नहीं व्हाट शी इज ट्राइंग टू शो टू द वर्ल्ड कि वो अभी उसके पास पैसा खत्म हो गया. I think all this is hypocrisy. She's hiding everything. She has lots of money. उसने सुशांत का सारा पैसा चुरा के रखा है अपने पास. उसने कहाँ रखा है ये हमको नहीं मालूम, पर उसके पास पैसा बहुत है. अभी बीच में किसी एंगेजमेंट में गई थी, बहुत सादा सा येलो कलर का ड्रेस पहन के गई थी, और कोई तो बता रहा था कि अरे अभी इसके दिन बहुत बुरे आ गए. अरे इसके दिन बुरे बुरे कुछ नहीं आए, इसके दिन बहुत अच्छे हैं. इसको बहुत बड़े बड़े लोग सपोर्ट कर रहे हैं. शी इज बीन कवर्ड बाय मेनी बिग पावरफुल पीपल. इसलिए तो वो इतनी सेफ है, अपने आप को सेफ समझती है. whatever it may be, these people are trying to clean her image. उसको पूरी तरह white wash करना चाहते हैं. they want to उसको relaunch करना चाहते हैं बॉलीवुड में, ताकि she get settled, लोग भूल जाए. पब्लिक पागल नहीं है, पब्लिक को सब समझता है, और पब्लिक कुछ भी भूलती नहीं है. this is my way of telling, this is my perception. पब्लिक सब ध्यान रखती है. अभी उसको इतना फ्री पीआर मिल रहा है. क्यों मिल रहा है यार? ये कौन है? वो अंबानी की बेटी है, टाटा की बेटी है, बिरला की बेटी है? नो. वो किसी मिनिस्टर की बेटी है? नो. वो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी है? नो. बट स्टिल उसको इतना बैकअप कौन दे रहा है? क्यों दे रहा है? कौन है वो तो ऐसा भी वो सुपरस्टार है? नो. वो बी ग्रेड एक्ट्रेस भी नहीं है, सी ग्रेड एक्ट्रेस भी नहीं. उसके 2-3 कुछ फिल्म्स आए होंगे, वो भी सारे सुपर फ्लॉप्स थे. आई एम टेलिंग यू. एंड everybody knows about this. And till 14th June 2020 nobody knew who Rhea Chakraborty is. हाँ, जिन लोगों ने उसके थोड़े बहुत फिल्म देखे होंगे उनको पता होगा, पर वो शी वॉज नॉट दैट ग्रेट एक्ट्रेस, और इतनी फेमस नहीं थी वो. ये पता नहीं, ये अभी सडनली ये पूरा बॉलीवुड उसको सपोर्ट कर रहा है. व्हाई आर दे सपोर्टिंग? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि इसको बॉलीवुड इसको सपोर्ट क्यों कर रहा है. कौन है ये बंदी? कौन है? हमें भी पता चले. सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि व्हाई आर दे सपोर्टिंग हर.
And why are they talking good about her? They're trying to clean her image, and they're trying to show no, she's very nice, she's goody goody, she has not done anything. ये सुशांत ने अपने आप किया है. और एक बात वरुण जी, आपने नोटिस किया होगा, जब से सुशांत की डेथ हुई है, ये बंदी ने, ये औरत ने एक भी बार, शी हैज नेवर अटर्ड अ वर्ड फ्रॉम अ माउथ दैट ही वाज बीन मर्डर्ड. वो हमेशा, शी हैज ऑलवेज emphasized on suicide theory only. This is my observation, and maybe it must be the observation of everybody. We everybody know about that, कि ये इसने कभी मर्डर का वर्ड भी मुंह से नहीं निकाला है. ये हमेशा बोलती है सुशांत ने क्यों सुसाइड किया, मेरा बॉयफ्रेंड था. अरे पहले तो तूने छुपाया था कि तेरा बॉयफ्रेंड है करके, और जाने के बाद अभी बोल रही मेरा बॉयफ्रेंड था. और ट्विटर पे ये ट्वीट कैसे करती है, कितना स्मार्टली ट्वीट करती है ये, कि अमित शाह जी को, कि सर प्लीज इन्वेस्टिगेशन करो कि व्हाई माय बॉयफ्रेंड वाज, व्हाई डिड ही किल हिमसेल्फ. अरे व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड हिपोक्रेसी. तुम क्या पागल समझते हो दुनिया को, पब्लिक को? अरे पूरी दुनिया को मालूम है सुशांत का मर्डर हुआ है, और तुम ये ढकने की कोशिश करती हो. तुम जितना ढकोगे वो उतना बाहर आने वाला है, ये जितना दबाएंगे ना उतना ये बाहर आने वाला है. और अभी पूरी दुनिया को मालूम है कि सुशांत का मर्डर हुआ है, और दुनिया में सारे लोगों को जस्टिस ही चाहिए सुशांत के लिए. एंड वी रियली फील वेरी बैड फॉर देयर फैमिली, हिज फादर, सुशांत फादर, हिज सिस्टर्स, कि ये लोग जिस तरह से उनको मलाइन कर रहे हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग. आप किसी के फैमिली को पिन पॉइंट या उनके बारे में बुरा भला नहीं बोल सकते हो, किसी को अधिकार नहीं है, हक नहीं है. पर फिर भी ये लोग इतने उनके फैमिली के बारे में बुरा बुरा बोल रहे हैं. अरे ये लोग भगवान से भी नहीं डरते, ये कौन है ये लोग? दे आर मॉन्स्टर्स, सीरियसली आई एम टेलिंग यू. पर इनका कभी भला नहीं होगा, इनको जो करना है करो. पर हमको इतना मालूम है, वी हैव टू फाइट फॉर सुशांत जस्टिस, एंड सुशांत सिंह राजपूत विल डेफिनेटली गेट जस्टिस, एंड वी विल फाइट एंड वी विल रोर टिल ही गेट्स जस्टिस. ये जो भी हो रहा है बहुत बुरा, या बहुत बुरा हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है. पर इतना कहूंगी वरुण भाई, कि सुशांत वाज एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस. उसने हमको बता दिया, एंड ही हैज ब्रॉट रेवोल्यूशन इन दिस वर्ल्ड. ये क्या है? यस यस. एंड वन मोर थिंग, कि वी नेवर थॉट अबाउट दिस. हम लोग तो इनको भगवान समझते थे, हम पूछते थे, इनके सारी फिल्म देखते थे, हमने कितना पैसा खर्च किया इनके ऊपर. इन्होंने क्या किया? इनके इनके इंडस्ट्री में से एक बंदा भी नहीं आया बाहर कि सुशांत के जस्टिस के लिए. मतलब कितनी कितनी हिपोक्रेसी है इनमें. ये दोगले लोग बोलते हैं ना, डबल स्टैंडर्ड वाले, यहाँ से भी बोलेंगे वहां से भी बोलेंगे. Yeah. ये सबको पता चल गया, बस हमें कुछ नहीं मालूम. हमको फाइट करना है, एंड इट इज, वी आर गोइंग टू फाइट till he gets justice, and we will demand for section 302, क्योंकि हमको वो चाहिए ही चाहिए. ये सब को फांसी की सजा होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. बिकॉज ये लोग कोई, वी कैन नॉट, क्या इनके ऊपर दया करने के लायक नहीं है ये लोग, ऐसा मुझे लगता है. क्या कहोगे आप वरुण जी? बिल्कुल. दया दया इज अ वेरी वेरी इनको अगर छोड़ भी दें, मैं तो कहता यस हूँ लोग, आई टेल यू समथिंग, यस people feel since Rhea Chakraborty did not physically kill Sushant, so उसके साथ थोड़ी सी leniency या थोड़ा सा उसको, people should let her go. Are you नो. serious? Are you serious? People who think like that, they really need to put their own son in यस Sushant's place. जाके पहले ये सोचो कि अगर आपका बेटा होता वहां पर, उसके साथ ये हुआ होता, फिर आप क्या करते? ये जो अभी स्क्रीन पे मैं फोटो दिखा रहा हूँ, अभी आपने जी एक जी. बात करी राइट, शादी की. ये या इनके पीछे खड़े हैं रूमी जाफरी. जी. I have no clue, and I would definitely be investigating more into this man himself. यस इसको क्या ऐसी पड़ी है कि रिया चक्रवर्ती को इसने एक सेकंड लाइफ या एक अपॉर्चुनिटी देनी है, एंड ही इज लाइक कि शी हैज सफर्ड. मैं I'm gonna quote his lines कि she has suffered a lot and she wants to move on in her life, जिसके लिए ये रूमी जाफरी is gonna give her a movie. और he is annoyed with people, he is so ओ माय गॉड. angry कि लोगों ने बहुत प्रॉमिस किया था रिया चक्रवर्ती को कि we'll give you movies and all that stuff, and now nobody is giving her any work, and I am gonna give her work. Are you serious? What is wrong with you? What kind of a sick mentality do you have कि अगर एग्जैक्टली. किसी को मारा है, लिटरली उसकी पूरी कॉन्स्पिरेसी में you've been, और जैसे कि आज इस चैट में ये जो ट्वीट्स की सीरीज थी जिसमें एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई कि वो जो पैसे जाते थे रिया चक्रवर्ती को क्वान से, वो वाज पार्ट ऑफ a thing that was being asked her, for her to do. वो एक काम यस करने के लिए रिया को प्लॉट किया गया था, एडवांस में उसको पैसे दिए गए कि ये लो तुम पैसे, जाओ एंड डू इट फास्ट.
तो अगर किसी को उस रोल के लिए हायर किया गया, हम सबको दिख रहा है, ऐसे लोगों को क्यों नहीं दिख रहा? और आपने बिल्कुल सही कहा कि वो लोग कौन है जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन है? जी व्हाई आर वी इवन थिंकिंग ऑफ गिविंग हर एनी, आई मीन ऐसा क्या खास है रिया चक्रवर्ती में कि शी इज नॉट लाइक, जैसे आपने वो बोला ए बी सी किसी भी क्लास की ये एक्ट्रेस नहीं है। शी हैज एग्जैक्टली डन नथिंग, शी इज नोबडी, स्टिल यस पीपल आर ट्राइंग टू बैक हर अप। व्हाई? यस व्हाई? यस And tell me one thing, Varun bhai, what has she suffered? Let me ask this question to everybody, to all the SSRians. इसने क्या सफर किया है? इसने तो लूटा है सुशांत को, उसका पैसा खाया पिया, मजाक किया, हाँ, और बाद में वापस सब कर चार के बोल रही कि मैंने तो कुछ किया नहीं. I am very neat and very clean. And people are blaming me. People are pinpointing me. You're pointing me directly that I have killed him. Arey, you were involved in the conspiracy from day one. This we know. Absolutely. Yes. और तो शादियों पे बुला के they are trying to, and you absolutely, you were spot on, that was my first observation. अगर मैं इस पिक्चर को देखूं, जी let me just make it full screen. Look at the kind of simple, वो एक एक जैसे कहते हैं ना, दिखा रही है शादी में आ रही है, ऐसे दिखा रही है हाँ जैसे नो मेकअप नो समथिंग, बड़ा बेचारी है, जैसे सफर कर रही हाँ है। और एग्जैक्टली और इतना इसने पैसा खाया, लूटा, खाया भी नहीं मैं कहूंगा, लूटा लिटरली। जी और कुआन से भी अलग लिया, काम करने के लिए भी लिया, लोगों के साथ भी अभी तो आदित्य ठाकरे एंड ऑल दैट, इसका क्या वो कनेक्शन है, वो भी कभी निकल के बाहर आएगा। हम्म बट शी इज जस्ट somebody who needs to be literally behind bars, और जैसे कि आपने कहा लिटरली है, ऐसे लोगों को तो अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेटली देर आर पीपल ऑफ द सेम कबाल, जैसे कि अभी आई थिंक सलोनी जी was ने लिखा था, Rumi हम्म Jaffrey is also from the same gang, and why he also is हम्म very questionable, of course. So if you're part of the same cabal, अब तो असली तो तब दिखेगा जब what is his name, जाफरी, नहीं, I'm forgetting, जिसकी अभी मूवी भी आई थी एक, जो इसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसका हस्बैंड अख्तर, जावेद तूफान अख्तर। तूफान तूफान हाँ, फरहान अख्तर के जी कब बेसिकली फरहान अख्तर इसको अपनी किसी मूवी में लेता है, दैट विल डेफिनेटली वेरी क्लियरली शो अस द होल कबाल। अभी तो नहीं दे जस्ट विल नॉट डू दैट नाउ दे विल नॉट डू दे विल वेट बिकॉज वो ऐसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे उसके ऊपर उनको मालूम है इसके ऊपर केस चालू है इसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं ये कभी भी शी विल बी अरेस्टेड इसलिए दे विल वेट दे विल लुक एंड देन दे डिसाइड लेटर जब वो completely हाँ they will not take any decision right now because they know the entire public the whole world is watching them and हम हमारी हर एक चीज पे नजर है उनको मालूम है इसलिए अभी वो इसमें फंसेंगे नहीं ऐसा मुझे लग रहा है right. Yes, but they are very smart. Let them do what they want to do. We only know one thing that we want justice for Sushant Singh Rajput, and he was really the poor chap, the poor innocent person was brutally killed. Itna Yeah, intelligent, itna intellectual person. He would have done so much for our country, for the world, and he was really looking forward to do so many things for women, for the country, for the world, and for many things. And he had a lot of plans in his mind. क्यों इन लोगों ने मारा यार बोलते ना अच्छा बंदा था और वो वैसे भी उसने कहा था कि मैं इंडस्ट्री छोड़ के जाने वाला हूँ मैं कुर्ग जाके ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला हूँ अगर वो जाने वाला था ना तो उसको जाने देते ना आप लोग हाँ क्यों उसको मारा हाँ और वो भी ही वॉज द ओनली सन ऑफ द फैमिली यार 4 बहनों के बाद का भाई था यार इनको इतना भी दिमाग में नहीं आया कि मारने से पहले आदमी सोचेगा यार कैसे मार सकते हो और उसने क्या आपका बुरा किया है किसके पैसे लूटे हैं किसका फिल्म छीना है नहीं इनफैक्ट इन लोगों ने उसकी फिल्म इसका पैसा सब कुछ लूटा है इससे तो बेचारे ने किसी का कुछ लिया भी नहीं से सीधा बंदा था एकदम जेंटलमैन था सीधा अपना काम से काम रखता था अपनी फिल्म्स करता था अपना घर घर संभालता था बस he had never grudges for anybody फिर भी ये लोग उस पे जलते थे उसके ऊपर कितने गंदे सारे एलिगेशंस डाले थे उसके बाद भी सुशांत भाई हमारा उसमें से बाहर आ गया ही वॉज क्लीन एंड क्लियर और उसके बाद भी इतना ब्रूटली मारने की क्या जरूरत थी इतना क्या खुन्नस निकाला आपने उसके ऊपर उसने ऐसा क्या किया था कि आपको इतना उसको मारना पड़ा इतना ब्रूटली दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन अगेन व्हेन आई थिंक ऑफ दैट ऑल्सो ना ऐसा दिमाग में ऐसा ऐसा दर्द होता है कि ऐसा क्यों मतलब वो आई एम नॉट गेटिंग द आंसर फॉर दैट इतना इतना ब्रूटली क्यों मारा बस यही सवाल बार बार दिमाग में आ रहा है
और Right. क्या दिखाना चाहते थे आप पूरी दुनिया को? क्या कि अगर हमारे कोई हमको टच करेगा तो हम ऐसे मारेंगे? अरे, where is the law and order? Where is our judiciary system? I don't understand. Our systems are so our legal systems are so weak and poor. We need to upgrade everything now, and this is the right time to upgrade our legal system. अगर अभी नहीं हुआ ना वरुण भाई, तो ये कभी नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। Yeah. और हमारे यस, हमारे सिस्टम तो अभी सारे लीगल सिस्टम हैज टू बी चेंज, और वी ट्रस्ट मोदी जी, we believe Modi ji, and we support him, and we want all the systems to be changed now. It is high time. It is अब ये हमारा तो एक सुशांत चला गया, और हमारे बाकी के सुशांत नहीं जाने चाहिए। अरे कहते हैं ना, मिडिल क्लास के इतने बच्चे टैलेंटेड होते हैं, अगर उनको आना है फिल्म इंडस्ट्री में, अगर उनको काम करना है, उनका टैलेंट दिखा रहे, तो आने दो ना। आप क्यों जलते हो? आप तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश एक्टर्स हो, आपने बहुत सारा पैसा कमाया है, नाम कमाया है, फिर आप इन पे क्यों जलते हो? वो अगर वो काम कर रही, करने तो उनको भी आने दो, आप भी आओ ना साइमल्टेनियसली, आपको कौन रोक रहा है? पर वही है आप ना, उनकी competition, right? They cannot even stand the बट kind बट of actor he व्हेन was, जो सुशांत ने किया, जो अपने इतने कम टाइम में, इन जी लोगों के इतने इतने बच्चे आए और गए, पता भी नहीं चला कौन आया, कब गाया, कब चला गया, राइट? जी 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 इतने बड़े बड़े नाम थे, और अब तक वो मारे मारे फिर रहे हैं कि किसी तरह उनको कोई काम मिल जाए। और हम्म, सुशांत ने सबका, इवन खान्स तक का जी बिजनेस हिला दिया था कि भाई उनके भी समझ नहीं आ रहा था, खान्स एंड द कुमार्स एंड एवरीबॉडी। सो यस इनकी यस इतनी इतनी वो कहते हैं ना, इफ यू रिमेम्बर, आई डोंट नो आपने वो देखा कि नहीं, बट पूजा मिश्रा जब आई थी, उन्होंने बहुत कुछ बताया था द खान फैमिली के बारे में, कि कितना ज्यादा कंपटीशन, पूजा मिश्रा के खुद के ब्रांड, उनके खुद के कपड़ों के ऊपर अपने लेबल पे लगा के आगे फॉरवर्ड करना कि दिस इज सिन्हा, उनका ब्रांड है। एंड किस तरह से लोग इन ऐसी, अब कपड़े, ज्वेलरी, इन सबको तो फिर भी रीब्रांड किया जा सकता है, किसी के टैलेंट को तो नहीं किया जा सकता, राइट? जी 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 तो वो एक बहुत बड़ा था। और जिस तरह से लोग धोनी से लेना चाहते थे, और बहुत सारी मूवीज, वो सुनने को तो ये भी आया था कि वो जो 12 सीजन या 12 एपिसोड्स का वो जो एक बनाना चाहते थे ऑन ऑन आवर जी नेशनल हीरोज, उसके हाँ लिए भी बहुत मारामारी थी। उसके लिए भी वो लोग थे जो चाहते थे कि ये सुशांत ना करे, बिकॉज दे न्यू, अगर सुशांत ने यस किया, ही वुड हैव जस्ट टेकन अवे द एंटायर स्पेस, पूरी की पूरी यस स्पेस सुशांत की हो जाती। यस यस सब इतने जेलस लोग, इतने, मतलब एंड ऑफ द डे सब लोग जैसे कहते हैं, राइट? यस, कर्मा विल एक्ट, कर्मा विल यस डेफिनेटली, आई नो। यस, कर्मा विल हिट बैक विथ इंटरेस्ट। यस यस, एब्सोल्युटली। मैं देख रहा चलो, हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ जी, यस यस, सुवर्णा जी, टेक जय केयर। हिंद, जय भारत, जय सी हिंद, यू जय सून। भारत, यस सी यू यस सून। या हाँ जी, बाय बाय। मैं गुरु जी आपके बोलने से पहले मैं ज़रूर कहूँगा, ये 2-3 चीज़ें और हुई हैं डेफ़िनेटली इन द लास्ट कपल ऑफ डेज़। एसआर के ज़्यादा हीरो बनने की कल कोशिश कर रहे थे, कबीर खान बन के आएँगे और हॉकी टीम का क्रेडिट लेने की बात करेंगे। बट अनफॉर्च्युनेटली मैं सिर्फ़ इतना ही कहूँगा कि थोड़ी देर पहले, सेशन शुरू होने से पहले, मैं भी देख रहा था। Fortunately, we didn't win, but at least we are still there for the bronze medal. So medal तो most probably हम लेके रहेंगे। बट ये बॉलीवुड के जो इडियट सब अब हर चीज में क्रेडिट लेने की जो उस आड़ में बैठे रहते हैं, कि किसी तरह हम बस अपने आप को, मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने मैसेज किया और उसके बाद कोच ने ही उसको जवाब दे दिया कि द रियल कोच, दैट वाज अ स्लैप ऑन हिज फेस। बहुत अच्छा स्लैप पड़ा, और बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया उसके बाद शाहरुख को। तो अब तो इन लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि अब इनकी कोई वैल्यू नहीं रही किसी भी नहीं तरह। नहीं नहीं, इनकी तो मूवी नहीं आ रही है, इसलिए इन तीनों खान्स का किताब आने वाला है, द थ्री खान्स, जिससे हमें पता नहीं इनके काले कारनामों के बारे में। इनका किताब भी बॉयकॉट करो। करेक्ट, करेक्ट, कौन नहीं पढ़ेगा? आप, कौन पढ़ेगा? द थ्री खान्स। करेक्ट। और यहाँ पर थैंक यू जूडी फॉर इवन रिमाइंडिंग मी दैट, राइट? मैंने एक ट्वीट कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले शायद, शेयर किया था। जिया खान का एक ट्वीट था, जब 2013 में जब काई पोचे आई थी, तो उसने सुशांत और पूरी मूवी वालों को, सबको कॉन्ग्रेचुलेट किया था। वहां पर आई वॉज वेरी शॉक्ड, आई वॉज वेरी शॉक्ड टू रीड के जिया ने इतना अप्रिशिएट किया, और 3 महीने
ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद शी वॉज नो मोर। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि दैट ऑल्सो प्लेड अ बिग फैक्टर, क्योंकि काइपोचे के लिए इस सुअर पंचोली ने भी ऑडिशन दिया था एंड ही नेवर गॉट सिलेक्टेड। और वहां पर जो सिलेक्ट हुआ उसने ओ हिस्ट्री। सोनल मैम, एक मिनट सोनल मैम, मैंने ये बोल दिया कि जिसका चैनल है वो जैसे ही मर्जी चलाए, मैं कौन होता हूँ बोलने के लिए। सोनल को क्या कह रहे हैं आप? गुरुकर वरुण के बारे में सचिन के चैनल पे क्या बोल रहे थे आप? एनीवेज यार, ये तो अब मैं आई कैन नॉट कंट्रोल एवरीबॉडी बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। एनीवेज, अबे भाई कंबागणी, कैसे हैं आप? खम्मा गणी, मैं भी ठीक हूँ। वो ये मुझे ये बात करनी थी शाहरुख खान के बारे में। हाँ जी। वैसे एक्टर लोग अपने किरदार में घुसते हैं, और कल इसका किरदार इसमें घुस गया था। कि मतलब इसको बहुत बड़ी थी ना, कि भाई मुझे क्रेडिट दो, मैं एक्स कोच कबीर हूँ। तो उसने, वो रियल कोच ने भी इसको मजेदार जवाब दिया, फ्रॉम रियल कोच। उसको भी पता था कि भाई ये सब क्रेडिट के लिए कर रहा है। और आता जाता एक मूवी क्या कर ली इसने, कोच की, ये खुद को असली कोच समझ समझ बैठा। एग्जैक्टली। अरे बहुत ही बेशरम लोग हैं, बहुत बेशरम लोग हैं। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे। हालांकि उतना टाइम नहीं मिलता, पर अगर हम सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठ के सिर्फ इनके ट्वीट्स और ट्विटर पे एक्टिविटी देखें, अरे भाई इतना ज्यादा गंदगी है इन लोगों में। और अब इस टाइम पे इनको समझ नहीं आ रही कि ये करें क्या। इनको समझ ही नहीं आ रही कि करें क्या, लोगों को कैसे वापस वहां लेके। वापस तो अब आ ही नहीं सकते, अब तो इनका तो लाइफ टाइम का हो गया गेम ओवर। सो बट एट द सेम टाइम ये तो अब ऐसे ही जवाब ही इनको देना बेस्ट है। और अब लोग, बाकी लोग जो जो जिन्होंने इनको सिर पे बिठा के रखा था, वो भी इनको जवाब देते हैं, तो वो और भी अच्छा हो गया। अब इनको दिखना शुरू हो गया कि भाई कहीं नहीं अब इनकी दाल गलने वाली। हो गया इनका बोरिया बिस्तरा पैक। और ये बॉलीवुड वाले, इनको मतलब इनको जितना मतलब वो कहते हैं ना कि कोई आदमी मतलब कम दिमाग वाला होता है, डम होता है, ये उससे भी गए गुजरे हैं। आलिया भट्ट 2012 की पिक शेयर करती है, उसमें वो सुशील कुमार जो भी मर्डर केस में मतलब जेल में बैठा है, वो 2012 की पिक्चर शेयर करती है। और वहां पर नीचे कैप्शन लिखती है, वो ओलंपिक 2021 वाला, और कॉन्ग्रेचुलेशन। उसमें वो इतनी ये मतलब मुझे ये मैं मिस कर गया। हाँ, जो हाँ उसने स्टोरी डाली थी आलिया भट्ट ने, वो 2012 की पिक इसने शेयर करी थी और स्टोरी के अंदर, और नीचे ओलंपिक 2021 लिखा हुआ था। तो मुझे क्या लगता है, इसको पढ़ने में गलती हो गई होगी। इसने जहां से वो पिक उठाई वहां पर 2012 12 लिखा हुआ होगा, और इसने, इसकी पीआर टीम ने बोला होगा जल्दी जल्दी डाल दो डाल दो। इसने जल्दी जल्दी में ईयर पढ़ा ही नहीं, उस पेज को डाउनलोड किया और स्टोरी पर डाल दिया। आई नो। मतलब यार, ऐसा, मतलब एक बार क्या भाई, आप जो भी लिख रहे हो, स्टोरी डाल रहे हो, पहले देख तो लो कि भाई स्टोरी में मैं क्या डाल रहा हूँ, उसका लोग क्या अर्थ निकालेंगे। कि भाई आप पब्लिक फिगर हो, तो आप जो भी काम करते हो उसको लोग देखते हैं। राइट राइट राइट, एब्सोल्युटली। नो, आई कंप्लीटली एग्री। हाँ बिल्कुल, बहुत बुरा हाल है इन लोगों का। दिमाग से तो बहुत ही पैदल थे ही थे। अगेन मैं ज्यादा उन चीजों पे तो नहीं जाता, ना तो इनकी पढ़ाई, ना इनकी कोई क्वालिफिकेशन, ना इनके अंदर टैलेंट कैलिबर, कुछ भी नहीं। बट फिर भी अपने नाम के बल पे, मैं कल ही शायद, कल या परसों एक देख रहा था, वो जो चंकी पांडे की बेटी है, और भी तो नाम भी नहीं मुझे याद आ रहा, वो अपनी एक नई कार के सामने खड़ी होके फोटो खिंचा रही हैं बस। वो देख लो, श्रीदेवी की बेटी, वो करोड़ों के घर खरीद रही हैं, जबकि कोई मूवी नहीं, कोई काम नहीं। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब पैसा, मनी, फेम, ये कहाँ से आ रही हैं चीजें? सब उल्टे सीधे काम, उल्टे सीधे लोगों को फंसाना और सुशांत जैसे लोगों को दबाना, यही सब ये लोग करते हैं। आई एम सीरियसली शॉक्ड। या अनन्या पांडे, थैंक यू। और और जैसे आपने कहा कि भाई इसमें मुझे एक चीज लगती है कि भाई ये शायद इन्होंने अपने पिताजी का पैसा लगाया होगा, क्योंकि वो भी प्रोड्यूसर रहे हुए हैं और स्टैब्लिश हैं इंडस्ट्री के अंदर।
तो क्योंकि अब ये लोग तो है क्या है, इनको ज्यादा 2-3 साल ही में है इनको, और इनका करियर भी कुछ ऐसे अच्छा चल नहीं रहा है अभी, तो पिताजी के पैसे ही लगाए होंगे और क्या। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वो तो बहुत एविडेंट है, पर पिताजी को भी तो पैसे कहीं से आने हैं महाराज, ये भी तो चक्कर है। दैट्स द होल पॉइंट, राइट? दैट इतना ज्यादा अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन, इतना ज्यादा, मैं बल्कि मैं आप सबसे इस टाइम पे एक बड़ा कैंडिड क्वेश्चन एक्चुअली सबसे पूछता हूँ। देयर इज समबडी हु इज ट्राइंग टू रीच आउट टू मी। शायद वो किसी चैनल पे तो आए हैं जिनका मुंबई में सलमान खान के फार्म के साथ कोई फार्म है, और वो मेरे को बहुत देर से ही इज बीन ट्राइंग टू रीच मी, और वो चाहते हैं कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आए, बात करें। तो मैं बल्कि आप सबसे उस चीज के लिए भी पूछना चाहूंगा कि मुझे नहीं पता कि कौन कितना, और मैं लाइव पे पूछ रहा हूँ, आई वांट ऑनेस्ट फीडबैक कि अगर आप सबको लगता है, मैं आज शायद उनसे बात करने वाला हूँ, अगर आप सबको ठीक लगता है तो वी लव टू हैव समबडी हु इज genuinely speaking against and has the right thing to say against certain people. तो अगर आप सबको लगता है कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए और उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए, प्लीज लेट मी नो। अभी नहीं मैं कह रहा कि अभी बताएं आप। he is somebody who has a farmhouse next to Salman's farmhouse, and I think, yeah, Kakkad, you're right, Aditi. No need, Varun. Okay. So yeah, तो अभी आप चैट में जो लिखना चाहते हैं लिखें, मैं बाद में भी पढ़ूंगा जरूर। बट एट द सेम टाइम प्लीज लेट मी नो, ऑन डीएम, या मेरे को मैसेज करें। बिंदु जी, थैंक यू। अच्छा, it has been covered on PF show. Okay, ठीक है। I'll look at all the responses, and I will let you know, because he has been contacting me for a very very long time. I think for the last 1 week. Unfortunately, मैं उनसे बात नहीं कर पाया because of course I'm traveling and all. So मैं in detail it's all been covered. ठीक है ममता जी, I get that honest feedback. No, Varun bhai. Okay, all right. Thank you. I think I got my responses. End of the day, एक बार फिर मैं before I let अबे भाई say anything else, बहुत सिंपल सी चीज मैं कहूंगा। And he backstabs Modi Varun. Okay, sir. All right, Judy. Thank you. Thank you. Pro Hindu. I think I got my answer. Thank you. Thank you. Thank you. All right. So before I let Abhay bhai say anything else, मैं एक बार फिर से जरा सा repeat मैं करूँगा just to summarize. A lot of things. ये जो Sid साइबर ने tweets एक series की है, इसके अंदर there are a lot of things that we all need to keep in mind. The most important, मेरे ये जो first or second session, they have been uh, very very evident कि sister का, Priyanka का, even Meetu, right? I mean, all the sisters, they had a very strong relationship with Sushant. ये लोग जो सुशांत और सिस्टर्स के बीच में एक वो रिफ्ट दिखाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सिस्टर्स वर बिहाइंड हिज मनी या हिज फेम। इन लोगों को शायद इनकी रियलिटी दिखाना भी बहुत जरूरी है कि दे हैड अ वेरी स्ट्रांग रिलेशनशिप, वेरी स्ट्रांग रिलेशनशिप, एंड इट वाज ऑल अबाउट that that sensitive relationship that they had, कि कई बार सुशांत को रिया के अगेंस्ट वो खड़ा होते हुए देख के सिस्टर्स को बहुत बुरा लगता था, कि रिया की इतनी फेवर में क्यों खड़ा होता है सुशांत। दिस वन पर्टिकुलर इंसिडेंट जहां से ये सब शुरू हुआ था, which was on the fourth day, that was like a very shocking thing for, I'm sure, for the sister, के इतने साल का रिलेशन, एक भाई बहन का रिलेशन, और 4 दिन का एक आउटसाइडर के साथ वो रिलेशन में, हाउ डिड सुशांत, एंड ऑफ कोर्स किसी भी बहन को वो गुस्सा तो चढ़ेगा ही, डेफिनेटली गुस्सा चढ़ेगा, तो आई रियली बिलीव दैट सुशांत ने करा वो किसी और इंटेंशन से था, बट मे बी इट वाज मोर अबाउट रिया टेकिंग इट द अदर वे कि यार मेरा तो काम शुरू हो गया, एंड नाउ आई कैन नॉट बी अवे फ्रॉम सुशांत, दिस इज द राइट टाइम। वो कहते हैं ना, जिस टाइम लोहा गर्म है उसी टाइम हथौड़ा मारो, तो इस टाइम पे आई बीन एबल टू सक्सेसफुली गेट रिड ऑफ द सिस्टर फ्रॉम द हाउस, लेट मी जस्ट स्टिक अराउंड,
क्रेडिट कार्ड यूज करो उसके फेम को एंड ऑल दैट. Very strong sibling bond. Yes, absolutely. And Aditi, even though, I'm going to flash this message. Even though I don't believe in certain things, um, कुछ चीजें थी जो हमें पता लगी थी, फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स आई वुड से, जिसके बेसिस पे हो सकता है किसी तरह का कंट्रोल, चाहे वो ड्रग्स के थ्रू, चाहे वो किसी और चीज के थ्रू, सुशांत के ऊपर किया जाता था. एंड दैट वाज वेरी एविडेंट फ्रॉम सुशांत की बॉडी लैंग्वेज. सुशांत जिस तरह से एक पूरे वश में आ गया था. So I don't want to say that this is the reason, but I would still say that I don't 100% believe in any kind of black magic and all that stuff, but it's quite couple of things possible around that as well. और जहां तक रही, मैंने आपको कुछ फोटोग्राफ, Rhea and Sushant used to get those pictures clicked versus Sushant and maybe Kriti Sanon, or Sushant and Lokhande, Ankita Lokhande ke saath jo pictures thi, they are very different. We will do a kind of a separate show. I'm gonna have different pictures, different visuals available for you. Some of the interviews, जब वो interviews देते थे या जब वो साथ खड़े होते थे, it was quite evident that Sushant was definitely in love with Ankita. अब अंकिता की तरफ से था नहीं था क्या था वो तो अंकिता ही जानती है, but from Sushant's perspective it was definitely something more than love. But Rhea Chakraborty के साथ it was definitely not love. It was more like a dealing, and that's what kind of makes us all feel so worried and angry, actually not worried but angry कि जब ये था ही नहीं, when this was not even a relationship, why did it last so long? Why did Sushant not kick her out? Why did the family was not able to kick her out and all that stuff? ये सब questions, issues हमारे दिमाग में आते हैं. But then he was under some kind of spell, and what spell, I don't know what that was. So we'll continue this. There are few more things we have to now get on to, the other people other than Rhea as well. बट रिया बीइंग द इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस, कैसे रिया और लोगों को लेके आई, कैसे रिया ने द टीम को रिप्लेस किया, कैसे रिया वाज, जैसे कि मैंने कहा, thanks to that individual who sent me that kind of thought, and it was a very good thought कि why would Sushant stay in a place where dogs are not allowed, जबकि Sushant and Fudge were inseparable? Why did he not take a place जहां पर the dog could stay with the owner within the house? तो ऐसे बहुत सारे questions, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. Before I end this session, अभय भाई क्या कहना चाहते हैं आप कुछ और before we end? मैं मतलब यही कहना चाहता हूँ कि मेरे अभी 2 पॉइंट. पहले बात मेरी ये है कि अगर आप एक चीज देखें तो अगर आप सुशांत को रिया के साथ अगर देखेंगे बाहर कहीं इंटरव्यू में, तो या तो रिया सुशांत के आगे चलती थी या सुशांत के पीछे चलती थी. वो दोनों मतलब साथ कभी नहीं चलते थे. जो चीज मैंने नोटिस की है कि भाई दोनों के ऐसे आ रहे जा रहे हैं, तो या तो वो सुशांत के पीछे चलेगी या सुशांत के आगे चलेगी. सुशांत के साथ चलते हुए मैंने कभी उसको देखा नहीं है. और जो बॉन्ड, जो केमिस्ट्री मैंने कृति के साथ सुशांत की देखी या अंकिता के साथ सुशांत की देखी, वैसी केमिस्ट्री रिया और सुशांत के बीच मुझे नहीं लगी. वैसी केमिस्ट्री मुझे नहीं लगी. क्यों? क्योंकि अगर आप सच में एक दूसरे को मतलब लव करते हो तो ऐसे आप अजीब अजीब चीजें मतलब एकदम अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़े करना या उसको ऐसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करना या अपने परिवार वालों के खिलाफ उसको मतलब भड़काना, अगर वो अपने
वहां पर चले जाए तो उसको फिर से अपने मतलब मुंबई बुलवाना, ये ये कौन सा मतलब लव का साइन है, मुझे बताओ। ये कौन सा साइन है लव का? कि भाई अगर आपका बॉयफ्रेंड आपसे कहीं दूर जाकर रह रहा है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राइट जबकि इसमें तो उसने उसको 2 दिन के अंदर ही फिर से वापस बुला लिया सुशांत को। वो चंडीगढ़ गया था जो 2 दिन के अंदर ही उसको वापस बुला लिया। और राइट दूसरी बात मेरी ये है कि जैसे अभी जो वो लखनऊ गर्ल का केस हुआ, उसमें एक चीज, जो वीडियो तो सबने देखे होंगे, या लेकिन एक एक चीज जो मैंने नोट की है कि वहां पर जो ट्रैफिक हवलदार है, हाँ अगर हाँ आप उस वीडियो को ध्यान से देखें तो एक बार मतलब एक बार बीच में वो छुड़वाने आता है और फिर वो चुपके से वापस वहां से निकल जाता है। अब वो लड़की उसमें जबकि उस लड़की की कोई गलती भी नहीं थी, तो भी वो उसको तो लगातार उसने 22 थप्पड़ मारे लड़के को। और आई नो पेशेंस तो लड़के का भी मतलब दाद देनी पड़ेगी, उसने पलट के एक थप्पड़ वापस नहीं मारा उसने, ना ही वो उसने कुछ किया। और मुझे एक चीज इसमें मिसिंग लगी, जो वो जो फेमिनिज्म का जो वो माला जपते रहते हैं ना फेमिनिस्ट लोग, वो उन उसके मुझे बहुत याद आई। और मैंने एक आदमी थी या औरत थी मुझे पता नहीं, तो उसमें उसका ट्वीट मैंने देखा, जो उस ट्वीट देखते ही मुझे एक ही शब्द मुंह से निकला कि भाई आ गए आप। आपकी बहुत याद आ रही थी कि उसमें लिखा हुआ था ट्वीट में कि भाई इस केस में फेमिनिज्म को क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये तो जेंडर इक्वलिटी के लिए होता है, कृपया मतलब फेमिनिज्म को टारगेट ना मतलब करें। लड़की थप्पड़ मारेगी? पर लड़के को उसने कुछ नहीं लिखा किया था हुआ ना? था कि उसने लिखा हुआ था कि भाई इसमें फेमिनिज्म को टारगेट ना करें। और लोग भी नीचे वाह वाह, वाह वाह। मतलब बिना गलती के लड़के को मारा उस लड़की ने, और फेमिनिज्म की बात कहाँ से आ गई? बाप रे। वही तो वो नीचे लोगों ने जवाब जो ट्वीट दिए ट्वीट हैं किस उसमें ट्वीट एक, ट्वीट किसने किया? सुअर भास्कर? सुअर नहीं भास्कर नहीं ने ट्वीट नहीं किया था क्या? नहीं, वो सुअर भास्कर? श्याम मीरा सिंह ऐसा नाम था कुछ, श्याम मीरा सिंह, जो वो भी वेरीफाइड अकाउंट, वेरीफाइड अकाउंट। राइट जो उसमें नीचे लोगों ने जवाब दिए हैं कि भाई यही मौका है का नाम फेमिनिज्म को सपोर्ट करके हीरो बन लेता हूँ। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए हैं उनको कि भाई फेमिनिज्म को सपोर्ट हाँ करके हीरो बन लेता हूँ। या नहीं, बहुत है वैसे, बहुत सारे लोग हैं। और मैं वही उस वीडियो के तो बारे में कभी डेफिनेटली आराम से भी बात करें अगर। पर मुझे बहुत हैरानी, बिल्कुल सही कहा अबे भाई, बहुत हैरानी हुई कि उस लड़के ने यू नो पलट के एक बार भी नहीं, एक आधा थप्पड़ होता है, चलो एक दो समझ लेते हैं कि चलो एक दो थप्पड़ पड़े और टॉपिक खत्म हुआ। बट देन दैट इज व्हाट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि इतने थप्पड़ नहीं पड़े, नहीं, बंदे ने उस एक लड़की को भी बार मुझे लड़, थप्पड़ नहीं मारा। लड़की भी जानती होगी, लड़की को भी पता होगा कि अगर उसने मुड़कर थप्पड़ मारा, काउंटर अटैक किया, तो केस होगा। उसके लिए जस्टिस चला जाए, जस्टिस फॉर वो उस लड़के का नाम, या हैशटैग तो जस्टिस फॉर। या मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए चैट में थोड़ी चीजें चल रही हैं, इसलिए अब मैं एक बार तो मैं जरूर इस चीज को एड्रेस करना चाहूंगा गाइस। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड आई विल बी वेरी क्लियर। प्लेटफॉर्म ये सबका है, बट इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे पॉइंटिंग फिंगर्स एट फैमिली विल नॉट बी अप्रिशिएटेड एंड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। सिंपल सी बात। मुझे नहीं पता क्या कंफ्यूजन है रिगार्डिंग फैमिली, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं नहीं है। फैमिली, नहीं एंड फैमिली बोल नहीं रहा है ना कुछ, इसीलिए। हाँ, कोई नहीं, मैं उसका भी अभी 1 मिनट जवाब देता हूँ। सो आई एम गोना पुट बोथ ऑफ यू ऑन म्यूट फॉर अ सेकंड। तो सिंपल सी बात है, अभी किसी ने और ने भी ऊपर लिखा था कि भाई वरुण भाई फैमिली क्यों नहीं बोल रही, क्या वो डर रही है? आई थिंक इट वाज एकता। ओके या एकता चंचल जी, वरुण सर एसएसआर के घर वाले चुप क्यों हैं? मुझे नहीं पता ये क्या ये एक सेंटेंस है कि चुप क्यों है। अ, आप लोग समझ क्यों नहीं पा रहे कि एक केस चल रहा है, दिस इज अ हाई प्रोफाइल केस, जहां पर केस के बारे में जितना वो बोल सकते थे फैमिली, उन्होंने बोला।
ट्विटर पे सिस्टर ने आके लिख दिया कि यहाँ ये चीजें गलत हो रही हैं, ये चीजें हो रही हैं, चाहे वो उस हाइट से रिलेटेड इश्यूज जब होते हैं तब वो ट्वीट करती हैं, जब वो सीबीआई से रिलेटेड डिमांड करनी होती हैं तब होती हैं। द फैमिली हैज ऑलवेज बीन अराउंड। मुझे नहीं समझ आ रहा कि फैमिली क्यों, आप कोई जो बहुत कम लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि फैमिली, अब फैमिली यहाँ पर रोज मेरी तरह या आपकी तरह या हम सब की तरह आके बैठ के यूट्यूब चैनल पे तो डिस्कशन नहीं करेगी। वो तो आई आई थिंक अगर कोई सोच भी रहा है कि किसी यूट्यूब चैनल पे आके बातें करें, दैट इज नॉट गोना हैपन, एब्सोल्युटली नेवर गोना हैपन, सिंपल एज दैट। सेकेंड थिंग, जहां तक रही कि डराया गया है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हम लोग यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं इम्तियाज खत्रीज एंड पॉलिटिकल लीडर्स, हम लोग यहाँ डायरेक्टली इम्पैक्टेड नहीं है। ये लोग directly impacted हैं, they are in the line of fire, to be very honest. And I'll take your comment as well, Monica. So they are in the line of fire. अगर इनको अपने भाई के लिए जस्टिस लड़नी है, लेनी है, they will have to stand together with a lot of people so that हर तरफ से उनको सपोर्ट मिले। नहीं तो अगर वो किसी के अगेंस्ट खड़े होते हैं, वी ऑल नो हाउ हाउ द सिस्टम वर्क्स। यहाँ पर हम अगर किसी के ऐसे अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे एज अ फैमिली, the case will be closed the very next day. So they have to go with the flow. They have to make sure they understand the gravity of everything and then speak up. आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करें, अंकिता लखंडे जैसे यूजलेस लोगों के लिए अगर फैमिली में से कोई ट्वीट कर देता है, तब उनको इस तरह से दे पीपल आर रेडी टू रिप देम अपार्ट। अगर एक अंकिता लखंडे जैसे बंद, आप ये सोचें अगर वो आके ऑन अ रेगुलर बेसिस किसी के लिए सपोर्ट या किसी के लिए सपोर्ट ना दिखाएं, what kind of havoc will that create, not only for them but also for the people जिनके लिए वो करेंगी। so they have to be very mindful, guys. So थोड़ा सा give them a little bit of leg space कहूँ, या give them some room to breathe. They're already in so much trouble. The family itself is in trouble. I'm sure there are pressures from all over. इवन द एडवोकेट्स वो भी इनको प्रोटोकॉल समझाते होंगे कि व्हाट, आप यहाँ तक ये कर सकती हैं, ये ट्वीट्स कर सकती हैं, इस तरह के कर सकती हैं, ये नहीं। सो देयर हैज टू बी समथिंग दैट दे आर फॉलोइंग, राइट? एंड ऑफ द डे, मैं बार बार ये बोलता हूँ और आप लोग भी समझते हैं, बहुत सारे लोग, they did not ask you, me, anybody to jump on this and say कि वरुण, आज से एवरी सिंगल डे एट 11 PM आपने लाइव आना है यूट्यूब पे, या प्रशांत आपको ग्राउंड पे जाके ये कैंपेन करने हैं। दे हैव नॉट आस्क्ड अस टू डू एनीथिंग। सो वी आर ऑल डूइंग दिस बेस्ड ऑन आवर ओन विश, क्योंकि हम सुशांत की डेथ से इम्पैक्टेड है, तो हम खड़े हैं। उनको सपोर्ट चाहिए, उनको ये इस तरह की नॉनसेंस नहीं चाहिए सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे। और दे आर कंपेयरिंग बिकॉज जिया मॉम हैड कम आउट ऑफ वे एंड शी हैज बीन फाइटिंग फॉर मोर देन फन, दैट्स व्हाई आई अंडरस्टैंड। बट मोनिका, same thing with Jia's mom, right? Initially she had to keep her faith. जब उन्हें लगा कि ये नहीं हुआ, that's when she came out and started speaking. She did not start speaking the very first day. She was fighting the case. अरे यहाँ तो अभी चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई। Let them do their due kind of diligence and let's get to a point. अगर कुछ गलत होता है, अगर कोई गलत बात निकल के आती है, trust me, as much as I can see the passion in the sisters' tweets, trust me, they will come out. And if they come out, they will even come out on the streets. Exactly. And that's a very good point that you brought, Sanyukta. That Priyanka Singh herself is an advocate. She knows the law procedure. So आप ये सोचिए, one of the sisters is an advocate. One of the like brother-in-laws is in the police services. आपको क्या लगता है, उनको क्या प्रोटोकॉल्स नहीं पता? क्या उनको नहीं पता कि वो क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए? Just give them that space so that they can breathe, they can help support us,
और जब उनको सपोर्ट देनी होती है वो आते हैं। प्लीज स्टॉप 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 सेइंग थिंग्स अगेंस्ट द फैमिली. Family is really in a very bad shape. They have lost their brother, their son. The father is really really frail and old. थोड़ा सा थोड़ा सा उनको आप ये सोचें, anybody, everybody who's here on the screen and on on messaging. फादर इज नॉट ऑन सोशल मीडिया, राइट? न्यूज़ में उनके बेटे की बहुत कम न्यूज़ आती है, बहुत कम चीज़ें पता चलती हैं। दे आर ऑल वेरी क्लोज नेट फैमिली, आई एम श्योर। सो बहनों के साथ या अपनी बेटियों के साथ जब वो बात करते होंगे, थोड़ा बहुत पूछते होंगे केस के बारे में। द होल फ्रिकन डे ही सिटिंग इन द सेम हाउस, अपनी चेयर पे, ऑल बाय हिमसेल्फ थिंकिंग अबाउट हिज सन। थोड़ा सा तो शर्म करें, थोड़ी सी तो कहीं से वो कहते हैं ना, ह्यूमिलिटी लेके आए कि पॉइंटिंग फिंगर्स एट द सिस्टर्स या इवन फादर के ऊपर या सन इन लॉ के ऊपर। अगर वो सोशल मीडिया पे आके ये जब देखेंगे, क्या क्या, लाइक व्हाट वुड ही थिंक, व्हाट वुड ही नो? तो थोड़ा सा थिंक अबाउट इट एंड अकॉर्डिंगली एक्ट, थोड़ा सेंसिबली। डोंट पॉइंट फिंगर्स एट द फैमिली। फैमिली का जब टाइम आएगा, फैमिली जब बोलने के लिए आएगी, ट्रू, I completely agree, Venki. If family didn't want truth to come out, they would have filed the Bihar. हाँ, ये जो जो कुछ लोग हैं, there are ये few क्वेश्चन people. ये क्वेश्चन था, ये जो 306 पर है, लोग पूछ रहे हैं कि 306 क्यों फाइल किया फैमिली ने, 302 क्यों नहीं फाइल किया ओ बिहार में? भाई, हाँ, इसके बारे में एडवोकेट विकास सिंह ने एक्सप्लेनेशन दी थी। लोगों की मेमोरी इतनी छोटी है, मैं बड़ा हैरान हूं। मैं भी हूं, आई डोंट से एवरीबॉडी, आई एम आल्सो पार्ट ऑफ द सेम। मुझे भी सारी चीजें याद नहीं रहती, बट ये ऐसी क्वेश्चंस हैं, ऐसी चीजें हैं जिनको बहुत स्पेसिफिकली विकास सिंह ने एड्रेस किया था अपने एक इंटरव्यू में। और मैं आज रिपीट करता हूं जो उन्होंने बोला था बड़ी क्लियरली, कि बेस्ड ऑन व्हाट द फैमिली एंड द सिस्टर प्रोवाइडेड टू मी, जो एविडेंसेस जो भी वो बात कर सकते थे, उसके बेसिस पे मैंने, एडवोकेट विकास सिंह ने उनको सजेस्ट किया था कि अभी के लिए दिस हैज टू बी 306, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होगी, when they will find out evidences are correct and proof हो गया है, they can easily change it from 306 to 302. ये दिस वाज समथिंग दैट, एक इंटरव्यू है, प्लीज गो एंड सर्च, अगर मेरे को मिल गया मैं ढूंढ दूंगा। विकास सिंह की ये स्टेटमेंट थी, उनसे बार 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 ये शायद लोग करते होंगे, तो जानबूझ के मुझे लगता है विकास सिंह ने ये क्वेश्चन शायद उसने उस रिपोर्टर को भी दिया था, जिस वजह से वो आंसर दिया गया था कि भाई साहब, बड़ी क्लियरली बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट वर प्रोवाइडेड टू विकास सिंह बाय द सिस्टर एंड द फैमिली, it was his own suggestion of doing it. पता नहीं लोगों को बार बार उस सर्कल में क्यों जाना। आप ये सोचें, when sister was not at the murder site, जब मारा जा रहा था, I'll be very blunt right now, जब वो वहां खड़ी नहीं, वहां उन्होंने उसकी फोटोग्राफ्स नहीं खींची, वहां उनको ये नहीं पता कि कौन कौन था उस टाइम पे जो उनके भाई को मार रहा था। व्हाट एविडेंसेस, व्हाट प्रूफ, वो वही बता सकती है ना जो सुशांत ने कभी उनको बताया होगा। अब उनको वैलिडेट भी तो पुलिस या इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही उनको वैलिडेट कर पाएंगे ना। सो व्हाई डू पीपल डोंट नॉट अंडरस्टैंड कि जब तक वो वैलिडेट नहीं होते एविडेंसेस, फोटोग्राफ्स खींची हैं, हम फोटोग्राफ किसी की देखते हैं तो हम तो बड़ी जल्दी बोल देते हैं, यार ये तो पक्का मैनिपुलेट हुई है, ये पक्का क्रिएटेड है। अरे फिर सुशांत की सिस्टर ने अगर कोई फोटोग्राफ्स दी हैं एडवोकेट को या एजेंसीज को, वो लोग नहीं उसको वैलिडेट करेंगे? तो इन्वेस्टिगेशन हैज टू हैपन एंड ओनली देन इट हैज टू हैपन दैट वे। इट कैन नॉट हैपन कि भाई मैंने बोल दिया यहाँ बैठ के कि भाई 302 करो, तो सीबीआई कहेगी ओहो अच्छा हाँ, वरुण कपूर ने कहा चलो यार लेट्स डू इट, 302 करके आज इसको केस को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे नहीं चलता बॉस, ये सिस्टम है, इसको वैलिडेट करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन होती है। आई एम सो ग्लैड आई सी एडवोकेट शरण जी, लेट मी टेक हिम। जय श्री राम शरण जी, कैसे हैं आप? जय श्री राम वरुण भाई, जय श्री राम। नमस्कार सबको, नमस्कार। हाँ जी, बड़े परफेक्ट टाइम पे आप आए हो एंड आई एम सो ग्लैड आप आए हो। आप जब भी आते हो एक रे ऑफ होप, एक रे ऑफ लाइट लेके आते हो सबके लिए, सो थैंक यू सो मच।
एक बार शरण जी, मैं सीधा क्वेश्चन से ही आपसे शुरू करता हूँ। मुझे नहीं पता, मैं बाकी हाल-चाल सब कुछ बाद में पूछेंगे। ये बहुत देर से, ये काफ़ी बार हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं और बड़ी बार आज आपने भी इसका जवाब दिया है, बहुतों ने भी दिया है। बट ये जो 306, 302 का जो कन्फ्यूजन है, थोड़ा-सा अगर आप इसके बारे में थोड़ा लाइट, इफ यू कुड शेड सम लाइट ऑन दिस। 306 और 302, राइट? हाँ, लोग कहते हैं कि 306 क्यों किया? फैमिली ने 306 क्यों किया? अच्छा अच्छा अच्छा। कभी ये मिलियन बिलियन ट्रिलियन डॉलर क्वेश्चन शरण को देना बहुत मुश्किल हो जाएगा ये। हाँ? और आप तो इससे पहले कि आप जवाब दो, दूसरी चीज, क्या 306 302 में कभी कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं? कभी भी हो सकता है। सेक्शंस कोई भी लगाया ना इनिशियली कोई सेक्शन अगर लगाया तो वो क्या हार्ड एंड फास्ट वही कंटिन्यू रहेगा, ऐसा नहीं रहता। जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने कभी एविडेंस सामने आना शुरू हो जाता है, वो तुरंत वो सेक्शन बदलते हैं, बदल के उसको वो कन्वर्ट करके चार्जशीट में फाइल करते हैं, अरेस्ट भी कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे केसेस में हुए हैं, अगर आपने गूगल करके देखा तो आपको पता चलेगा। सेक्शंस कम ज्यादा ये वो हो सकता है, कोर्ट भी कर सकता है। जब चार्ज रखता है ना तब भी कोर्ट भी कर सकता है उसमें वो देख के। परफेक्ट, परफेक्ट। आपको आपको मैं इस तरफ इसलिए एक सेकंड के लिए रोकूंगा, क्योंकि मैं एक बार फिर रिपीट कर देना चाहता हूं उन सबके लिए जो यहाँ चैट में अभी बैठे थे या जिनको क्वेश्चन है कि बॉस, जैसे ही एविडेंसेस वैलिडेट होते हैं या प्रूफ आ जाते हैं या कंफर्म हो जाते हैं, कोई भी सेक्शन चेंज हो सकता है। बार बार इस नैरेटिव को मत चलाएं कि फैमिली इन्वॉल्व है, फैमिली ने जानबूझ के इसको 306 के। फैमिली का इससे कोई लेना देना, ना तो फैमिली जज है, ना फैमिली सुप्रीम कोर्ट है। फैमिली वो करेगी जो उनको उनके एडवोकेट ने सजेस्ट किया। एडवोकेट विकास सिंह ने एक इंटरव्यू में बिल्कुल क्लियर बोला कि बेस्ड ऑन व्हाट वाज प्रोवाइडेड टू मी बाय द फैमिली, मैंने उनको सजेस्ट किया था 306, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। आई वांट टू जस्ट क्वैश दैट स्टेटमेंट वन। प्लीज गो अहेड शरण जी, आगे आप बोले। नहीं नहीं भाई, ये देखिए, ये सारे ना मिलियन डॉलर क्वेश्चंस ये सामने आए हैं, रखे हैं, लोगों को लगता है वो पूछते हैं, है कि नहीं है? लोगों को ये लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है, ये क्यों लग रहा है ये भी देखना बहुत जरूरी है सारी चीजें। राइट। अगर ये देखो, फैमिली ने बोला, विकास सिंह ने ऐसा कहा वैसा कहा, तो विकास सिंह का भी ज्यादा जिम्मेदारी है। अभी मैं नाम लिया तो फिर बोमा बोम हो जाएगा सबका। अभी लोग लोग है ना, कुछ भी बोलो उसका ही गलत और मिस इंटरप्रेट करते हैं हमेशा। कोई सही बात। लॉयर कोई भी हो, उसका जिम्मेदारी ज्यादा बनती है वो केस को उनको सलाह देना, क्योंकि लोगों को, क्लाइंट को ज्यादा मालूम नहीं रहता वो केस में क्या है क्या नहीं है। एविडेंस देखने के बाद उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि क्या है, ये केस ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। उनका लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। जो क्लाइंट है ना, कभी भी क्लाइंट को मालूम नहीं रहता, कोई खून करके आता है, वो खून किया है ऐसा थोड़ा ही बोलेगा लॉयर को, वो तो डिफेंड करने के लिए बोलेगा ना। तो राइट। जिंदगी उसको डिफेंड करते करते उसको काम करना पड़ता है। इसीलिए अगर मेरे पास कोई लोग आए तो मुझे, मेरी काम है कि उनका डिफेंड करना। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ना, सुशांत के पक्ष में जितने भी एविडेंस आता है वो हमारी जिम्मेदारी है वो केस को सपोर्ट करना। क्योंकि ये सरकारी पक्ष का केस है, सरकारी मीन्स वो एक्यूज के अगेंस्ट में केस है, जिसके ऊपर हम लोग एलिगेशन कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में जो जो एविडेंस आता है उसको सपोर्ट करना हमारा काम है। आज के दिन में इन्होंने अगर कंप्लेनेंट है इस केस में तो उनको सपोर्ट करना हमारा काम है। सरकारी वकील ये नहीं पूछेगा, हमारा एक क्रॉस एग्जामिनेशन वो नहीं करेगा, सामने वाला पार्टी करेगा, हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन ये क्यों किया वो किया, ये वो हम लोग एक्चुअली है ना, लॉयर को एडवाइस प्रॉपर तरीके से उनको करना चाहिए। उनको को कभी कभी समझ में नहीं आता। और दूसरी बात आपको याद होगा, ये गैंग है ना, ये पिठानी गैंग है ना, उनको इन्फ्लुएंस करने का कोशिश किया शुरू में। हाँ। शुरू में उनका दोस्त बन के उनको इन्फ्लुएंस करने का कोशिश किया, वही चैट वही ईमेल, वो दो सामने वाला पार्टी के साथ भी वो संपर्क रखते थे। ये सारी चीजें हुए हैं, इन्फ्लुएंस हुए हैं। इसीलिए दोनों पार्टियां, उनका लॉयर हो ये हो, और थोड़ा केयर ज्यादा लेना चाहिए था केस जब आप करते हैं। आपको याद होगा, मुझे अभी तक इतना लाखों करोड़ों लोग है ना, ये मर्डर मर्डर बोल के बोल रहे हैं,
आपको अगर किसी ने या आपने सुना तो आप मुझे बोलिए। मैं तो कभी तक अभी तक कोई प्लेटफॉर्म में मैंने नहीं सुना उन्होंने 302 के लिए या मर्डर ये वर्ड यूज किया। कोई उनका कोई भी सदस्य अगर यूज किया, ये मेरा तो समझ में नहीं आया। आपने सुना है क्या ये कभी? नहीं नहीं, मतलब अभी तो सी एडवोकेट्स तो बहुत पर्टिकुलर होते हैं, जो एक्चुअल जेन्युइन रियल नहीं नहीं, मैं एडवोकेट्स हैं। एडवोकेट का बात नहीं कर रहा, एडवोकेट का हाँ बात नहीं कर रहा। अगर उनका हाँ, जो सदस्य जिन्होंने भी अबेटमेंट टू सुसाइड का केस आपने फाइल किया, बाद अच्छा, में पब्लिक प्लेटफॉर्म में या सोशल मीडिया में किधर उधर मर्डर का एक वर्ड तो आपने यूज किया है क्या? मैं वो सुन रहा था, वो सुनना चाहता था। नहीं मैंने तो मैंने, नहीं सुना। मैं थोड़ा बहुत तो देखो, मैं तो बोलता हूँ। अगर हम आप मेरी बात करें, अगर फैमिली की बात करें, फैमिली अबेटमेंट टू सुसाइड तो नहीं यूज करती, अगर मैं आपका क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ तो। नहीं नहीं, अबेटमेंट टू सुसाइड का केस आपने फाइल किया, राइट बाद में जैसे लाखों करोड़ों लोग मर्डर 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 302 लगाओ 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 बोल रहे हैं ना, राइट तो राइट राइट। उनका कोई भी सदस्य, दो रिश्तेदार, कोई पॉलिटिशियन है, कोई फैमिली मेंबर है, कोई ये वो, जितने भी लोग सोशल मीडिया में ट्वीट करते हैं, जिनको ज्ञान है कानून के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं, उन्होंने कभी मर्डर ये वर्ड यूज किया है क्या? हत्या वर्ड यूज किया? 302 लगाओ, ये कभी सुना है क्या आपने? हाँ, फैमिली ने किया है, शरण जी, फैमिली ने तो किया है। हाँ, मैं नहीं सुना, इसीलिए हाँ, मैं बहुत फैमिली ने तो कम किया है। एक्टिव रहता। हाँ, वो 302 लगाओ, अगर उन्होंने अगर बोला है तो वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है। तो ये तो राइट इन्वेस्टिगेशन मशीनरी का काम है। और मैं राइट। यही बोलता हूँ, सरकारी पक्ष, अभी मैं सरकारी वकील हूँ, मान लीजिए सरकारी अच्छा वकील हूँ, और 100 विटनेसेस है, हजारों विटनेसेस है, तो मेरा काम है उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करना नहीं है, उनका नैरेटिव लेके वो केस कैसा मजबूत होता है वही देखना है। वो कंप्लेनेंट होगा, विटनेस होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होगा, जितने भी एब्सोल्युटली एविडेंस है, मेरा राइट काम है आने के बाद उनको ही क्रॉस करना, वो नहीं रहता। तो राइट। इसीलिए मैं यही बोलता हूँ ना, जो भी सुशांत का केस में उनको प्यार करने वाले जितने भी लोग लड़ रहे हैं, उनका जितने भी एविडेंस आते हैं उसको सपोर्ट करो, सपोर्ट करो। मैं इसीलिए बोलता हूँ ना, वो तो क्रॉस करना सामने वाला पार्टी का काम है ना, हमारा काम नहीं है। एक भी वर्ड है तो आपका फेवर में आप ले लो, अगर वो नहीं है तो वैसे तो हमारा कहने ना कहने से केस पे कुछ असर होने वाला नहीं है। वो तो सीबीआई करेगा ही करेगा, जिसको वैलिड लगेगा वो लेगा, नहीं लगेगा वो नहीं लेगा। लेकिन ये पब्लिक पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, दूसरा कुछ नहीं होने वाला उसमें। got it. नहीं, एब्सोल्युटली। और टेक एक्शन, मे बी द एविडेंसेस, राइट। मैं सिर्फ कुछ देख रहा था चैट में, अगर आपके लिए कोई क्वेश्चन हो। बट वरुण एडवोकेट तो रियल हैं। या एडवोकेट्स तो राइट, ओके, राइट। सो या शरण जी, तो मैं सिर्फ चैट्स की तरफ ये देख रहा था, बट इंडिकेटिंग एग्जैक्टली, हेमा जी ने बिल्कुल सही कहा एक्चुअली। फैमिली हैजंट यूज्ड द वर्ड डायरेक्टली नहीं, बट जैसे आई थिंक मीतू जी या किसी ने तो लिखा था कि सीबीआई हैज टू टेक सर्टेन अदर एक्शंस, ये वो, और उन्होंने और भी ट्वीट्स किए हैं विच इम्प्लाई, आई वुड यूज द वर्ड इम्प्लाई, कि ये बेसिकली कल्प्रिट्स आर स्टिल आउट एंड अबाउट, और वो उस तरह से दिखा रही हैं कि बेसिकली इट्स नॉट सुसाइड और अबैटमेंट टू सुसाइड नहीं, इसके अंदर मर्डर का एंगल है। बट एट द सेम टाइम आप वरुण भाई, सॉरी मैं हाँ जी इंटरफेयर कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, बोले। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि सुशांत का केस हम लोग है ना, हम आवाज उठा रहे हैं सुशांत के केस के मजबूत करने के लिए। हाँ जी ओके, सुशांत का फेवर में जो भी चीजें है लोग उस हिसाब से बात करते हैं, लेकिन वो केस भी करने के लिए कोई बात नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें है। आप करेक्ट। देख लो, पिछले 10-11 महीने में जिन लोगों पे हमने विश्वास रखा, जिनको हमने एविडेंस दिया, जिनको अपना माना, वो लोग धीरे 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 साइड चेंज करना शुरू कर दिया। फिर एक अपना एक नैरेटिव शुरू हो जाता है। कोई बोलता है अभी हमें डिस्टर्ब मत करो, हम इस केस में नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, वो नहीं है, ऐसे चीज, यानी कि रिलक्टेंट एटीट्यूड बोलो, अप्रोच बोलो, वो शुरू होता है, हुआ है। या चाहे वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर भी नाम आया है, एलिगेशन लगा है। वैसे तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमेशा शक के दायरे में रहा है, पहले से रहा है, या केस से या और भी बहुत सारे केसेस में
इन्वेस्टिगेशन एजेंसी शक के दायरे में रहा है, और वैसे इंडिविजुअल व्यक्ति भी रहा है, बहुत सारे इंडिविजुअल व्यक्ति भी रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, ना हम किसी को, मैं है कौन, हम लोग है कौन, मैं पर्टिकुलर मेरे बारे में बात करता हूँ, मैं हूँ कौन, मैं किसी को क्लीन चिट देने वाला या किसी को ये बोलने वाला। जिसके ऊपर एलिगेशंस लगा है अभी तक, तो उन लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए, नहीं तो उनको आके स्टेटमेंट देना चाहिए एजेंसीज के सामने, या सोशल मीडिया में भी आके अगर चाहे तो वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर किसी के ऊपर एलिगेशन अगर लग रहा है तो। ये इसीलिए ये सारे लोग शक के दायरे में, आप सुन लीजिए, दुनिया शक के दायरे में है सुशांत का केस में। दुनिया मैं बोल रहा हूँ, दुनिया इसीलिए सीबीआई है ना, क्योंकि आप देख लीजिए, सब लोग सपोर्ट करने वाले, दोस्त बोलते हैं, अपना बोलते हैं, ये वो, ये रिलेशन वो रिलेशन, सारे लोग एक्सपोज हो गए कि नहीं आज के दिन में, बोलिए 10-11 दिन में, हाँ है कि नहीं है। शरण और वरुण भाई और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुशांत का कोई ब्लड रिलेशन में भी नहीं है, वो लोग है ना, प्यार से बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं और केस मजबूत करने का हमेशा कोशिश करते हैं। थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि केस मजबूत हो। केस वीक होने जैसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए हमारे, और सारे यूट्यूबर में भी मतभेद होना चाहिए, ऐसा कोई काम भी हम लोगों को करना नहीं चाहिए। ओके, मैं 3 क्वेश्चन आपके लिए अब आए हैं, मैं तीनों क्वेश्चन एक के बाद एक आपसे पूछता हूँ। आई थिंक दीज विल बी द लास्ट 3 क्वेश्चंस गाइस, क्योंकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट 3 घंटे होने वाले हैं फिर से तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आकाश जी कह रहे हैं, सरन सर, व्हाई फैमिली स्टिल साइलेंट एंड व्हाई आर दे नॉट गोइंग फॉर ग्राउंड प्रोटेस्ट ऑल लाइक निर्भया एंड अदर केस? क्या कहना चाहेंगे? ये फैमिली ही इसका जवाब दे सकता है ना, शरण क्या देगा इसका, राइट है कि नहीं। और हर एक का आदमी का लड़ने का तरीका अलग रहता है, हम कंपेयर नहीं कर सकते ना एक दूसरे का। ओके, दूसरा क्वेश्चन मैं सोनल का लेता हूँ। वो कह रही हैं, if a person files a 302, do they have to mention the name of the person who they suspect? 302 लगने के बाद सारे जो भी है सस्पेक्ट्स का नाम उसमें आता ही है ना, सारी चीजें। राइट, तो बेसिकली जहां तक मुझे समझ आई थी 302 की, शरण जी, वो तभी लग सकता है जब कॉन्क्रीट एविडेंसेस कह लें कि इतना सॉलिड एविडेंसेस इकट्ठे हो गए हैं उन लोगों के अगेंस्ट जो कि कॉन्स्पिरेटर्स हैं या culprits हैं, तब उस केस में 302 लगता है, राइट? तभी लगा। ये कब होता है, ये कब होता है, बाद का स्टेजेस, आप समझ लो ये बात। बाद का स्टेज में जब आपने एक सेक्शन लगाया, दूसरा सेक्शन जब कन्वर्ट करने के लिए जब हम वो लोग जाते हैं, एजेंसी हो या कोर्ट हो, जज हो, जो भी है, उस वक्त आपको ज्यादा एविडेंस देखने की जरूरत पड़ती है। लेकिन शुरुआती में नहीं है, शुरुआती में नहीं है। अगर मान लो मुझे शक है किसी के ऊपर, आपने बोला ना फरवरी में जान को खतरा था, सुप्रीम कोर्ट ने में भी इधर उधर, हाई कोर्ट में इधर उधर भी नाम आया है ना, कुछ बड़े बड़े लोगों का, सो कॉल्ड फेक बड़े लोगों का, मिनिस्टर का नाम आया है ना, इनका इन्वॉल्वमेंट है, उनका इन्वॉल्वमेंट है, ये है वो है। अगर इनिशियल डेज में ये सारे चीजें आ गए, तो शुरुआत में ऑलरेडी 30-40-45 दिन तो उसमें आपने लिया था। तो अगर मान लो अगर शरण लॉयर है या कोई कंप्लेनेंट है, आम आदमी भी अगर है, तो मुझे अगर लग रहा शक है, तो शक के आधार पे मैं किसी का भी ऊपर एलिगेशन लगा सकता हूँ। इन्वेस्टिगेशन करके उनको क्लीन चिट देना इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का काम है। मुझे ऐसा ही अपेरेंटली लगता है ये लोग हैं, ये लोग उसको फंसा रहे हैं, इसका जान खतरे में था, इन्होंने हमसे बात किया था, तो हमें ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने इन्होंने इनका हत्या किया। ऐसा शुरू में आप बोल सकते हो, तो उस एंगल से ही इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। इनिशियली बाद में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए सॉलिड एविडेंस का जरूरत पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक सेक्शन लगा हुआ रहता है ना, आपको रीजनिंग देना पड़ेगा, ये सेक्शन से ये सेक्शन में क्यों आया, है कि नहीं? करेक्ट, ऑलराइट। और एक लास्ट क्वेश्चन, शरण जी, हु इज रिस्पांसिबल फॉर चेंजिंग अ लीगल सिस्टम ऑफ अ कंट्री, पीएम, प्रेसिडेंट या कौन? जो लेजिस्लेटर्स है, लेजिस्लेटर तो है, जो कानून बनाते हैं, पार्लियामेंट हो, सारे स्टेट का असेंबलीज है, ये रिस्पॉन्सिबल है। जो चुन के जाते हैं वहां मेजोरिटी से कानून बनाते हैं, वही तो लोग रिस्पॉन्सिबल है पूरा सिस्टम चेंज करने के लिए, कानून बना मजबूत करने के लिए। क्योंकि आधा तो क्रिमिनल्स रहते हैं, आधा तो हंगामा करते हैं, काम तो करना नहीं है इनको, है कि नहीं? और आधा तो सारे लोग यही तो रहते हैं, जेल में बैठ के भी अस्पताल में भेजते हैं, अस्पताल में बैठ के सरकार बनाने का प्लान करते हैं,
तोड़ मरोड़ करने का प्लान करते हैं। ये चीजें अनफॉर्चुनेट थिंग है। राइट, बहुत सही बोला आपने ये। चलो मैं एक इस लास्ट पे थोड़ा जनरल एक मोनिका सा क्वेश्चन है, बट मैं उसको थोड़ा सा जनरल कर देता हूँ बिफोर वी एंड, कि इस टाइम पे एज एन एडवोकेट शरण, आप इस केस को कैसे देख रहे हैं, इसका फ्यूचर, एंड हाउ डू यू सी इट प्रोसीड फ्रॉम हियर? मैं तो हमेशा बहुत दिन से बोलता हूँ, मैं तो पॉजिटिवली देखता हूँ। इसमें लॉजिकल कंक्लूजन आएगा, बहुत सारे लोग अंदर जाएंगे, और कितने लोग जाएंगे कितने लोग बाहर रहेंगे वो बोलना मुश्किल है। मुझे तो लगता है इसमें 302 लगेगा और बहुत सारे लोग अंदर जाएंगे। ऑलराइट, आई थिंक दैट्स गुड इनफ फॉर एवरीबॉडी। अबे भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं शरण जी को, या वैसे आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ हाँ, मुझे दो बात करनी है। पहले जो ये जो लोग फैमिली को बोल रहे हैं कि फैमिली कुछ बोल क्यों नहीं रही है, कुछ बोल क्यों नहीं रही है फैमिली, तो एक एक चीज ये है कि भाई जो लोग बोल रहे हैं कि 306 ही क्यों लगाए, डायरेक्ट 302 क्यों नहीं लगाए। तो अगर हम देखें तो जब ये 306 का जो धारा लगाई थी, उस समय मतलब वो फैमिली को ये तो पक्का हो गया था कि भाई मेरा बेटा अपनी मर्जी से सुसाइड नहीं कर सकता है, उसको उकसाया गया सुसाइड के लिए। ये चीज उनके दिमाग में थी कि भाई सुशांत से सुसाइड नहीं कर सकता, उसको या तो उसको मारा गया होगा या उसको सुसाइड के लिए उकसाया होगा। अब जो अगर वो उस समय भी 302 की लगा देते, पर क्या है कि उतने मतलब वो वैलिड प्रूफ नहीं थे कि भाई हाँ भाई अब ये लग सकती है, क्योंकि कोर्ट में कोई भी सेक्शन लगाने के लिए आपको पहले प्रूफ देने पड़ते हैं कि भाई 302 है तो ये हमारे पास प्रूफ है इसलिए 302 लगाओ। उसने उतने वैलिड प्रूफ नहीं थे, इसलिए इसको उस समय के हिसाब से वो जैसे विकास सिंह जी हैं लॉयर, तो उनको पता था कि भाई ये कभी भी चेंज हो सकता है, इसलिए उस समय के हिसाब से उन्होंने 306 लगाई, ताकि और इन्वेस्टिगेशन चलेगी, आगे बढ़ेगी, तो वैसे ही प्रूफ अपने आप वैलिडेट हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो ताकि आगे अगर हम 302 के लिए भी अगर उनको बोले 302 लगाओ, तो वो 302 लगा सकते हैं। और दूसरी बात जो है वो है कि भाई मेरा मतलब भाई है जो 14 साल का, जो मतलब मैं कुछ दिनों पहले अपने वहां पर दूसरे गांव गया था, जो मैं वहां पर ऐसे सुशांत का मतलब गाना सुन रहा था, तो उसने मुझसे कहा कि ये सुशांत का तो मतलब ये, उसने बोला कि भाई मैंने सुना है ये सुशांत का तो मतलब हाँ मर्डर हो गया है, ये इसने आत्महत्या नहीं की, मर्डर हुआ है। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, उसने जो भी सोशल मीडिया पर जो प्रूफ के रूप में जो पिक थे वो उसको दिखाया, उसको समझाया कि भाई ये है, तो इसको देखकर तुझको क्या लगता है कि भाई ये सुसाइड है या मर्डर है। तो उसने साफ साफ एक ही बात कही कि भाई ये साफ साफ दिखी मर्डर रहा है। अब देखो, अब कि भाई साफ साफ दिखी ये मर्डर रहा है। उसने पहले सुशांत के सिर्फ नाम ही सुना था, उसने उसने वो पिक्चर नहीं देखे थे कि भाई वो जो मैंने उसको वो सुशांत के जो मर्डर वाले पिक्चर थे वो मैंने उसको उसको उसी टाइम दिखाए थे, उसने पहले नहीं दिखे थे। अब पहली बार देखने में आदमी अगर ये समझ जाता है कि भाई हाँ यहाँ पर ये अगर फांसी लगाया तो लगाई है, तो ये बीच सेंटर मतलब गर्दन के सेंटर में निशान क्यों है, गर्दन के ऊपर निशान क्यों नहीं है। अगर ऐसा ही मतलब समझ गया था वो, उसने साफ साफ यही चीज बोली थी कि भाई हाँ ये इसकी मतलब वो मैनेजर के दिशा सलियान के बारे में भी उसने बात की थी। तो मैंने उसको उसके बारे में भी समझाया था कि भाई इसका भी मर्डर है, और पुलिस ने डाटा नहीं दिया था, मतलब जो बेसिक जानकारी है इस केस के बारे में वो सारी मैंने बताई थी। तो उसने कहा था कि भाई हाँ इन दोनों को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। अब उसकी उम्र क्या थी कि भाई 14 साल, सिर्फ 14 साल। और जो
एक और बात जो ये जो है ये मीडिया से मुझे ऐसी मतलब वो जो लखनऊ वाला केस हुआ था ना, उसमें मैंने पेपर में पढ़ा था कि भाई जो उसके बारे में जो न्यूज़ छपी थी कि भाई वो लड़का और लड़की के बारे में, तो उसने मीडिया ने क्या किया, वो न्यूज़पेपर वाले ने उसमें विलन पूरी तरह उसने उसको लड़के को दिखाया है कि भाई वो लड़का आया और उसने लड़की को टक्कर मारने की कोशिश की, और उसमें ये भी लिखा हुआ था न्यूज में कि भाई लड़के ने गाली दी उसको, लड़की को, और फिर वो भागने लगा तो उसने रोका, फिर बाद में ऐसे उनको पकड़ लिया गया। अब इस चीज का हमको तो पता है कि भाई लड़के की गलती नहीं थी, लड़की की गलती थी। अब जो बड़े बुजुर्ग जो सोशल मीडिया पर नहीं है, जब वो ये चीज ये खबरें पढ़ेंगे कि भाई हाँ ऐसा हुआ है, तो उसके लड़के के दिमाग लड़के के लिए उनके दिमाग में तो नेगेटिव न्यूज ही बनेगी ना कि भाई हाँ ये लड़के ने गलत किया है, जबकि हमको पता है रियलिटी क्या है, लड़की की थी गलती। राइट अभी भाई, मैं अब यहाँ पर सेशन को खत्म करने लगूंगा। सलोनी जी इज हेयर। सलोनी जी, आप भी कुछ कहना चाहती हैं? हाय वरुण, जय श्री राम। शरण जी। जय श्री राम मैडम, जय श्री राम। Varun, if you remember, very long time back, I had said the same thing about 306, 302, if you remember, कि भाई उन्होंने जो 306 लगाया है, उनके किसी ने तो मर्डर होते हुए देखा नहीं था। करेक्ट। तो कोई प्रूफ तो था नहीं उनके पास वो टाइम में। करेक्ट। तो और ये मालूम था कि ये जो रिया है वो काफी इंस्टिगेट कर रही थी अगेंस्ट द फैमिली एंड एवरीथिंग, एंड शी वाज मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग एंड एवरीथिंग, दोस थिंग्स दे न्यू, एंड द ट्रांजैक्शंस, मनी ट्रांजैक्शंस एंड ऑल, उसका सारा उनके पास था रिकॉर्ड। तो उस पे जो विकास सिंह जी ने बिल्कुल सही उनको सलाह दी कि आप अभी 306 लगाइए, क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं। अगर 302 लगा देते और इन्वेस्टिगेशन भी मान लो चालू भी कर देते, तो भी उनको पूरे प्रूफ नहीं मिलते, तो वो केस शट हो जाता। अब इसमें 306 में कम से कम उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन चालू होगा, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में चीजें आएंगी, जो चीजें सामने आएंगी, प्रूफ सामने आएंगे, उसके अकॉर्डिंगली वी कैन ऑलवेज चेंज इनटू 302। उनको ये तो मालूम था कि ये मर्डर हुआ है, बट दे कुड नॉट प्रूव इट, सो दे कुड नॉट से दैट इट इज अ मर्डर, राइट। सो अभी क्या हो रहा है ना, देखिए अभी एजेंसीज भी नाक एक तो पकड़ते हैं सीधा, सामने से आके नाक पकड़ लो, एक होती है घुमा के नाक पकड़ने वाली बात। हाँ, इस तरह से किसी ना किसी केस में देखिए इतनी एजेंसीज लगी हैं, ईडी लगी है, एनसीबी लगी है, और सीबीआई लगी है, और एनआईए भी है, सब है। तो कोई किसी को पकड़ा सीबीआई ने, किसी को पकड़ा एनसीबी ने, किसी को पकड़ा दूसरी एजेंसी ने, ईडी ने। उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन चालू किए, और उनको सबको मालूम है कि ये सब पूरा कबाल जो है सब चीजों में इन्वॉल्व है। तो धीरे धीरे वो उनको किसी भी में जिसमें ज्यादा स्ट्रांगली जल्दी से जल्दी पकड़ सकते हैं, दे आर ट्राइंग टू डू दैट। अब देखिए जिया खान का केस है, अभी वापस से सीबीआई में खुला है ना, आया है स्पेशल सीबीआई कोर्ट में। तो ये जो सुअर पांचोली है, ये खाली एक केस में तो इन्वॉल्व नहीं है, वी ऑल नो, द वर्ल्ड नोज अबाउट इट एंड हैज बीन सेइंग अबाउट इट। तो उधर से पकड़ लिया जाएगा, समझिए आप बात। और फिर ये इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रहे हैं, तो उनमें भी नाम आएगा बाद में, सूनर और लेटर। जिया का, वो दिशा का है, और अपना एसएसआर का है, और अदर जो भी जिसमें भी है उनका अगर इन्वॉल्वमेंट, वो सब निकल के आएगा। एटलीस्ट एक एक जगह से जहां से भी पकड़ सकते हैं उनको पकड़ तो रहे ही, लोग काम तो कर रहे। ऐसा नहीं है कि खाली सीबीआई को ही सारे एसएसआर के लोगों को पकड़ने का है। Why so many agencies are there?
So different agencies for different charges, they can catch them, and then later on the proofs come out. Then there'll be other sections also from the CBI side. This is what, and it has been spread in the social media by some people that 306 lagaya hai, it cannot be changed into 302, which is absolutely wrong, and nobody should believe it also. Any section you वो put तो क्लियर कर when ही दिया आज, शरण जी ने भी when क्लियर कर दिया. हाँ नहीं, क्लियर बहुत लोगों ने किया, but still people are still spreading it. Yeah, I don't know And why. मतलब any मैं section you put. एक मिनट. वरुण भाई मुझे आज्ञा दीजिए ना, आप कंटिन्यू करिए. Sure. हाँ, मैं खत्म ही करने वाला था वैसे, पर ठीक है. Thank you so much, शरण जी. Thank you for joining and clarifying. जय श्री राम. जय श्री राम. Any section you put, but if the proofs are found in the other cases, regarding to the other section, they can always put those sections also. So there is no way that we cannot, it cannot be changed into 302. It is very much possible. I think people should, once and for all, should understand the truth and do not go by other narratives and other people saying all false news. Yeah. That's But it, otherwise, Varun. we'll Thank continue. you. Thank you so much, Saloni ji. Take care. All right, I'm gonna end it. गुरु जी, आप वापस आए हैं, आपने कुछ कहना है तो please go ahead. नहीं. Okay. All right. अबे भाई, आप कुछ कह रहे हैं? मुझे यही कहना है कि भाई सुशांत को न्याय जरूर मिलेगा. आप सब उम्मीद बना कर रखें, अगर उम्मीद पर ही दुनिया कायम है. बिल्कुल. जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर जिया, जस्टिस फॉर दिशा, एंड जो भी जस्टिस के लिए मतलब अपना लड़ रहे हैं, उनको जस्टिस जरूर मिलेगा. Absolutely, मिलेगा, definitely मिलेगा. All right, so on that note, I'm gonna end this session. Of course, we'll continue talking about Rhea Chakraborty. We're not gonna stop. अभी बहुत सारी और स्क्रीन्स, बहुत सारे और चीजें बची हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे. उसके साथ साथ ऑब्वियसली बहुत सारे और टॉपिक्स हैं जो बॉलीवुड की जो एक्सपोजे हो रही हैं, चाहे वो पॉन्ड कुंद्रा से रिलेटेड हो या तो अभी शिल्पा शेट्टी से रिलेटेड चीजें आ रही हैं बाहर. तो अभी तो बहुत कुछ होता जाएगा और बॉलीवुड का तो सर्वनाश पूरा लिखा ही है. सो आई एम रियली ग्लैड ऑल दिस इज हैपनिंग. अनफॉर्चुनेटली सुशांत की को अपनी लाइफ इसके लिए खोनी पड़ी, बट वी विल डेफिनेटली गो अहेड एंड कंटिन्यू टॉकिंग अगेंस्ट अबाउट रिया चक्रवर्ती, जो कि हमारे लिए कॉन्स्पिरेटर नंबर 1, एंड ऑफ कोर्स शी इज playing a very very big role in this thing. So we'll continue to talk about that. We will continue to talk about many more things. One thing which I will just end up this particular session with is, please, for God's sake, if you go to multiple channels, if you go to multiple places, stop people from creating fake narratives, fake news, and stop people from bad mouthing the family. अगर आप नहीं कर सकते, अगर आपको नहीं बोलना अगेंस्ट उनके, देन प्लीज स्टॉप गोइंग देयर. क्योंकि कई बार ये होता है, लोगों को देखा जाता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, वहां पर वो कुछ भी किसी भी फेक नैरेटिव को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं, फिर इधर आते हैं तो इधर के नैरेटिव्स को इट कैन नॉट वर्क दैट वे. इट हैज टू बी, यू कैन नॉट बी न्यूट्रल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. यू कैन नॉट बी same time pe for and against Sushant. It is not possible. If you are for Sushant, then you have to stand for the family. If you are for Sushant, you have to stand with dad, with sisters, and you have to stand with a lot of other things. Yes, asking questions to the sister, please go ahead. हम भी पूछते हैं, हम भी tag करते हैं. We also want them to be there, but we also need to understand their situation. So stop doing that. But they will block us. Yes, so block ho jao, na jao session pe, right? That's the thing. They don't have guts. They are definitely people without any guts, without any spine. But at the same time, please, now is the time. Start speaking against those idiots.
because those idiots will not stop if you don't ask them or if you don't push them to stop. करने दो उनको, जितना एग्रेशन दिखाना है आपको सेशन पे दिखाएं. लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू. यू नो, सुशांत के नाम पे बहुत कुछ चला रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स चला रहे हैं, ऑडियोज चला रहे हैं, वीडियोस चला रहे हैं, नया नया नरेटिव्स चला रहे हैं. कभी सुशांत मरा है, कभी नहीं मरा है, कभी जेल में मरा है, कभी बांद्रा में मरा है, कभी मॉरिशियस, यू नो, व्हाटएवर नॉनसेंस दे आर सेइंग. उसके बाद अब फैमिली का, बहुत देर से बोल रहा हूँ कि अब ये फैमिली का एंगल बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है. फ्रेंड्स वाला एंगल अब थोड़ा क्वैश हो गया है, तो अब थोड़ा शांत हो गए हैं ये लोग. All their agenda is to get, you know, their own benefit out of it. Few of them have already got it. चाहे वो असाइलम के फॉर्मेट में हो, चाहे वो पैसों के फॉर्म में हो, जिस तरह भी हो. बट प्लीज गाइस, आई नो कर्मा विल गेट देम. Karma has to, you know, they will pay the price. So I will end this session. I'll see you guys tomorrow. Most probably now we'll be more consistent. बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजों के बारे में हम आते रहेंगे, and we'll continue to talk. But if you are, yes, Salonichi, diverting the case, that is the whole goal. जैसे डिग्रीज बदलती हैं वैसे नरेटिव्स बदलते हैं. So thank you for all the love and support, especially you know, all the people. I know a lot of you, I haven't been able to talk to you and message you back. I will guys. सतीश जी, भगवान करे आपका मैं स्क्रीन पे मैसेज करता हूँ. भगवान करे वो दिन कभी भी ना आए अब, because end of the day I have learned the lesson very hard way, very hard, you know. And I feel sorry to the entire Sushant, you know, family as well as the warriors. But at the same time I feel कि चलो, you know, इसी बहाने शायद मुझे इस चीज के अंदर I had to be pulled in. I was not about to talk about Sushant in this way, in this capacity. So I'm grateful I was pulled into it. But no more fake narratives, no more fake stories, no more lies, no more, you know, deviation from the case. Almost same time, Shobhaji, we'll be there. I will set up the session. I'll let you know. And please stop the fake people, fake narratives. I will see you guys tomorrow. Uh, no, Mamta ji, जाएं, अगर कुछ fake है, you know, please tell us. Please tell everybody that there is fake narratives floating around. We have to finish them completely. So thank you so much. Take care. Good night, everyone. And I will see you guys tomorrow. Bye-bye.